You sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up in the window. Smaller and smaller you fade out. Hop up in the window. Yeah. You cannot get my vibe, no there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no there's no way. You can say what you want, me levitate. Watch me levitate. Hey, watch me levitate. Try to paint me like a no-name, so sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you, please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies, you wanted my demise, now you're watching me rise, rise, rise. Up in the window, smaller and smaller you fade out. Up in the window, yeah. You cannot get my vibe, no there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, hey, watch me levitate. Up in the window. Up in the window. Up in the window. Up in the window. Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, levitate. Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate. Watch me levitate. You cannot get my vibe, no there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, watch me levitate. What up, guys? Welcome to another live stream. देखो guys, मुझे लाइव आना था बट मैंने लंच नहीं किया था और 10 मिनट में इंटरव्यूज है तो आना पड़ा. मैं ऑनेस्टली ना मैं चिलिंग्स हूँ. कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है बट यार आज जी का 1 लाख हो जाएगा पूरा. वाई फेस कैम ऑफ क्यों? हाँ क्यों? फ्लैग्स एनर्जी ऑल द फकिंग वे. रेगुलर स्ट्रीमर अवार्ड वो तो मैं हुई. रेगुलर स्ट्रीमर तो मैं हुई यार, ऐसा मत बोलो. रेगुलर स्ट्रीमर और व्हाट यार, ऐसा तो मत बोलो. Map looks fine with the blips. Yes, we have 4 pink blips out there. Out. That looks nice. One show me 41. कलर नहीं ओनली पिंक. कलरफुल नहीं ओनली पिंक. मैं मंग रहा हूँ. 3 बढ़िया. उसके बहुत पैसे लगेंगे यार. फिफ्थ लैब सेम लाइन और लेफ्ट राइट वो रिवील नहीं करूँगा यार. जब लगेगा तब रिवील करूँगा.
अभी तो बस खाना लेके जा रहा हूँ इसलिए आई डोंट चेंज दिस लिवरी राइट नाउ। अगर ऐसा हुआ तो टाइम टू हायर ग्राइंडर्स, नॉट हायर ग्राइंडर्स। देखो यार, जब गैंग को दिक्कत होती है वी ऑल स्टार्ट ग्राइंडिंग टुगेदर। न्यूक्लियर का फोन का क्या हुआ? न्यूक्लियर का रिस्पॉन्स आ गया है। अगर पता नहीं हो तो गाइस न्यूक्लियर का रिस्पॉन्स आ गया है। आज बहुत रिस्पॉन्सेस आए आज। Hello, Pastor. How are you doing? I'm doing fine. I'm doing all good. It's time to wake up the oil grinder. देखते हैं कौन सी रैंक मिली है न्यूक्लियर को कैडेट। इंटरव्यूज के रिजल्ट आ गए हैं। सोफा जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उन सबके रिजल्ट आ गए हैं। बिसाइड्स अ फ्यू 3 लोगों का री इंटरव्यू होने वाला है। 3 लोगों का री इंटरव्यू होने वाला है। एमपी की कौन सी मिली? एमपी को ऑफिस से मिला। हम सोच रहे वॉरियर, सागाशेवा एंड राउजी तीनों का साथ में री इंटरव्यू ले, फुल मौज। कोको कौन सा रैंक मिला देखना पड़ेगा यार, भूल गया। Four double one to Rex. एक सीट आता हूँ। जी सर। न्यूक्लियर को कैडेट राउजी का शायद से री इंटरव्यू होगा। रिस्पॉन्स दिखा दो, ठीक है, वो कर सकता हूँ मैं। किसको जब चाहिए? पीछे का माहौल संभाल लो फिर बात कर। सर हेलमेट निकाल दो। गाइस तुम्हें लोगों को रिस्पॉन्स देखना है। हाँ सर बोलो। Here for the interior.
नो सर फॉर द रिक्रूटमेंट लाइक वो रिस्पॉन्स आ गया है हमारा इंटरव्यू का भी. तो लिखा था क्या आ जाना बैच लेना? सर वही मैं पूछने आया था सर लाइक कब आना है लाइक कोई आई. Wait until there be announcement for the training and stuff, then you can come out and take the badge. ओके सर थैंक यू सर. बता दियो सर. हाँ खाना खाने से पहले. What are you eating? I'm eating a bowl of rajma. I'm switching to a slightly healthier lifestyle. Trying to. And now I have like 4 pieces of kakri left. फिर दिखाऊंगा. पहले खाना तो खत्म करने दो यार आराम से. Good morning, Iman Sudam. क्या हाल है हर्ष? जैसे 2 पीस काकड़ी बचा है तो मेरा लंच खत्म हो गया. बल्डी अजय को आज हड़ताल पे नहीं जाने का. 222 1041 10 any active dispatch. 10 for 10 10 on the actives. कैसे हो भास्कर भाई? बस बढ़िया. और क्या और जो भी ऑन ड्यूटी है जस्ट ओपन दी एमडीटी एंड क्लोज इट वंस. I'm going to be 10-7 for like 2 mics. 10-4. ये क्या हुआ? Okay. All right. So let's start from here. ये तो जो main 5 थे. These were the main 5 that got selected at a higher rank compared to everybody else. Raz, Mikey, Ocean, Ronit and Dominic. And now I'm just going to scroll down slowly. Goody Kamari, Cadet SASP, Carbine, Junior Ranger SASPR, Speedy Solo Cadet LSPD, Benji is Deputy BCSO, AVG is Officer LSPD, Vansh is Cadet SASP, Arzival is Probationary Deputy BCSO, James Gordon War Eagle is Officer in LSPD, Arman Walker is a Cadet in the SASP, Kantilal Mishra is a Cadet in the SASP, Prince is a Cadet in the SASP, Nazgul is a Cadet in the SASP, Golf Fund is a Cadet in the SASP, Omkar is an Officer in the LSPD, URGG is a Cadet in the SASP, Donut is a Cadet in the SASP, Champion is a Cadet in the SASP, Zelos is a Solo Cadet in the SASP,
Spencer is a deputy in the BCSO. SK Joshi is a cadet, solo cadet in the BCSO. Yeah, acha. Emperor is an officer in the LSPD. K2 is a solo cadet in the LSPD. Rob Martin is a cadet in the SASP. Dramgun is a cadet in the SASP. Murtajis is a cadet in the SASP. Mac Gaming is a solo cadet. 441. Nathan Brown is a solo cadet under the BCSO. AS is a cadet under the SASP. Evo Parker is cadet under SASP. Cobra is deputy under BCSO. मैं क्यों पढ़ा पूरा पर Nucleus cadet under SASP. Arushi is probationary deputy under BCSO. Rancho Zod is a cadet under SASP. Sardar Khan is a cadet under SASP. Barood Singh is a cadet under SASP. Dwanit is cadet. Alek is cadet. Kabir Singh cadet. Carl Johnson cadet. Goku-san, Darkstar Fury solo cadet under LSPD. AKM is cadet. Lucky is solo cadet under BCSO. Aman is deputy. Ruskin Potato is Havaldar. Harry Stark is Havaldar. Abhi Kartos is deputy in BCSO. Midas is solo cadet under LSPD. And Rudra is cadet under SASP. ये देखो गाइस, ये दोनों हवलदार है. देखो मेरा रिजेक्ट किया. ऐसा है क्या सिल्वर? ऐसा है क्या? Cadets and SASP will further be given different departments, yes. As soon as they are solo cadets, they will be departmentalized. We have 3 candidates so far. Re-interview शायद से होगा वॉरियर का, सागा शवा का एंड इसका राउजी का टुगेदर. न्यू लिeutenant क्यों? Besides, okay, I'll tell you one thing. Raz and Mikey are the only 2 people right now who have a very high rank. जिसको हम FTO बनाना चाहते थे, that is Ocean, Dominic and Ronit, they have got senior officers. इससे higher rank किसी को नहीं मिला है. इससे higher rank किसी को नहीं मिला है. Probationary is like solo cadet. वॉल का क्या लगा? वॉल नॉट सिलेक्टेड एज ऑफ नाउ. वेयर इज जिलन? उसने कुछ फॉर्म नहीं भरा है. बैजेस कब से दोगे? देंगे. डायनो का देखा जाएगा वंस ही वांट्स टू डू कॉप आरपी. आई डोंट थिंक अभी उसका मन है, पर जब भी उसका मन करेगा दैट टाइम वी विल फिगर समथिंग आउट. दैट्स नॉट एन इशू. सोलो कैडेट इज 1 रैंक बिफोर ऑफिसर, 1 रैंक आफ्टर कैडेट. न्यूक्लियर को क्या रैंक मिला है कैडेट? जॉइनिंग कब है? बता देंगे यार, अभी तो चालू हो रहा है सब कुछ. एमपी को ऑफिसर मिला है. हल्का हाथ रखना. अरे शैम्पू. राजी को क्या रैंक मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला. पास्कल पीडी जॉब होनी चाहिए. यस, होगी. एजेंटस इज एन ऑफिसर इन बीसीएसओ. सर 4 10-4. कैप्टन अभी स्टार्ट होगा. कर सकते हैं. अभी 3 कैंडिडेट है अभी के लिए ना. आई थिंक स्टार्ट करते हैं और क्या, एक करके. और क्या 15 मिनट तो लगेगा एक पे ना. 22241+1. 101 to Rex, actually 76 and 19. Let's just start off the interviews. It's already 2. Yeah, 10-4. I am grabbing some food. Then will be 7. 10 for copy that. Please get some for me also. Actually disregard Rave's call. I got him covered. 10-4.
बहुत है क्या आपके पास? बहुत है, रुको देता हूँ। वाओ, आज का हो गया। डन सी। थैंक यू मैंने 30 खरीद के लाए थे दोनों के, तो है। खराब ना हो जाए बस। हाँ मैंने अभी अभी खरीदा, मैंने कहा ठीक है। तो जॉर्डन है क्या अभी? कौन कौन है? जॉर्डन एंड यू शर्लॉक, अरे मी दास दादा भी है यहाँ तो, अरे क्या बात है। अच्छा सब है, योर है, आई एम देयर, रेव, पाब्लो, रेक्स सब है। अच्छा पाब्लो भी आ गया। पाब्लो तो एमडीटी में दिख रहा है। ओके ओके। दास दादा यहाँ क्या कर रहे हो आप? अरे यहाँ पे ही सो चाय गया बना था। रहे थे क्या? अच्छा अच्छा। अरे वो केविन बटलर है क्या अभी? नहीं अभी नहीं है। यार जॉब भी नहीं है, मैं रेडियो कनेक्ट नहीं कर पाऊँ। उससे बोलो बोलो। हाँ रुक जा, मैं करता हूँ। गेट खोल देता हूँ, नीचे चले जाओ। और बात प्राइम, बउआ का कोड 0 हुआ था, उसको इंटरव्यू देने आना पड़ेगा, उसका कोड 0 हुआ था उस दिन। सैम बने का रैंक, सैम बने का फॉर्म किधर आया? अर्जुन पटेल सेलेक्ट है, अर्जुन पटेल का डिस्कॉर्ड क्या है? और वो वॉरियर न्यूक्लियर सिलेक्टेड एज कैडेट वॉरियर का देखा जाएगा लाइफ में, क्या पता। व्यास भाई भी बहुत स्ट्रिक्ट कॉप आरपी कर रहे थे कल। किसी से पूछ लो। सर ड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, एंड राज इज अ वेरी गुड कॉप, राज इज अ वेरी गुड कॉप। जिसका फाफा गैंगस्टर, उसका डिस्कॉर्ड क्या था मैं भूल गया। वॉरियर बोल रहा है कैरेक्टर में से निकालेगा सारी पीढ़ी है भाई, सब लोग को एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं? हाँ मैं वॉरियर को बैन कर लूँगा, गलती से बारू से रिवील कर दिया वो ऑन स्ट्रीम, उसने मेरा ऑफिशियल रोल रिवील कर दिया था ऑन स्ट्रीम, पर वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा। बारूद नाम था, बारूद सेलेक्ट हो गया है। सुपर ह्यूमन का क्या हुआ? वो भी सिलेक्ट हो गया। 4 चैट पढ़ा जा रहा है मेरी, ऑफ कोर्स पढ़ा जा रहा है। चालू हो गया क्या अभी? अभी चालू होने वाला है इन लाइक अराउंड 5 मिनट्स। अभी तक कितने कैंडिडेट्स हैं? 4-5। चल फॉर कॉपी दैट। टॉप 3 बेस्ट ड्राइवर्स इन पीडी अकॉर्डिंग टू यू। आई डोंट वांट टू कंसीडर माई सेल्फ इन द टॉप 3,
But top two drivers right now are probably Mikey and Pablo. न्यूक्लियर हो गया सिलेक्ट यस Mike is probably the best driver right now. अर्जुन पटेल डिस्कॉर्ड पार्ट मारो अगर खुद का रिस्पॉन्स ढूंढ रहे तो सी अगर रिस्पॉन्स आया है तो आया है Is SASP cadet greater than LSPD chief? Yes, but the roster here is not an SASP cadet. They are not an SASP cadet. They are just working under the entire San Andreas State Police as a cadet under all departments combined. So that's why we have removed the SASP cadet role. हमने वो हटा दिया है ताकि लोग confuse ना होए. वरना कोई कैडेट ना कोई कैडेट जाके पाब्लो को बोलेगा ओ पाब्लो ओ जरा 2 चाय लाइयो ओ चुपचाप चीफ 2 चाय मुझे फर्क नहीं पड़ता तू चीफ है भाई SASP कैडेट है हाँ 2 चाय चुपचाप लाओ बात मानो मेरी और पाब्लो भी लाइक ठीक है सर लाएंगे यार क्या दिक्कत तुम हमारे सीनियर हो चाहे तुम कैडेट क्यों ना हो तुम SASP कैडेट हो तो हम हमारे सीनियर हो हाँ जो भी सिलेक्ट हुआ वो ऑन ड्यूटी कब आएंगे जब उनका ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ हो जाएगा तब वी विल फिगर थिंग्स आउट डॉक्टर एंड डायनो लीड का पार भी करेंगे वैनी का क्या हुआ उसने भी फॉर्म भरा है ट्रेनिंग में भी आईसी और ओसी वो देखा जाएगा Will training be on stream? I am not sure right now. अभी तक सबने अच्छा इंटरव्यू किसका था आप अभी तक सबसे अच्छा इंटरव्यू किसका था आपके हिसाब से सबसे अच्छा इंटरव्यू 302 direct of Zedas. 10%. Okay, 10 for. I was just checking. Want to dispatch as any officer not at 19? 10. Let's start interviews by 2:20. 3 minutes. 10-4. राज भाई को हाई कमांड कॉप देना बेस्ट डिसीजन था वो हाई कमांड नहीं है ही इज हाई रैंक देयर आर ओनली 7 high commands. The high commands are as per rank wise also. SASP में it is me and Logan. LSPD में it is Pablo and Tanmay. BCSO में it is Jordan Sendit and Rave Dart and SASPR में it is Anubhav. Ocean भी like chief से direct senior officer बना दिया. I think he was sergeant or lieutenant or something like that in NP also. उनका को क्या रैंक है? आई थिंक ऑफिसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट देखना पड़ेगा. हेलो प्रजक्ता मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ यार. फॉलो चीट में चैट पढ़ रहा हो तुम लोग बोल रहे हो मैं इग्नोर कर रहा हूँ यार. हाँ to dispatch. Send it. 10-4, send it. लोअर पार्किंग किसने भेजा मेरे को? Thanks, all thanks to me. 10-4. अरे मुझे क्या मैं किसी को इग्नोर कर रहा. Is there any chance that
We'll see Army Chief 2 है Army Chief PD में हेलो पास्कल बड़ा 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 ओमकार की पुलिस अभी कैसी है डिपेंड्स करता है लाइक समटाइम्स आई फील ही इज टू aggressive which is not nice but otherwise he's good मेरा चैट नहीं पढ़ा था फिर से लिखता रहता सीनियर ऑफिसर ऑफिसर में क्या फ़र्क है रैंक और क्या एम्परर ऑफिसर न्यूक्लियर कैडेट न्यूक्लियर बुरी तो होगा एमपी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कॉप का कंप्यूटर न्यूक्लियर एमपी ने 1.0 में भी कॉप किया था 2.0 में आई थिंक कॉप किया था फॉर नॉट रॉन्ग सो ही हैज़ कॉप एक्सपीरियंस ट्रूपर की ड्रेस यही है कि और कोई है ट्रूपर की ड्रेस में चेंज करने वाला एज सून एज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्लोथ आर पुश्ड इन वो कब होएगा देखा जाएगा बट समथिंग इज रेडी एज सून एज दैट इज पुश्ड इन माई आउटफिट इज चेंज मेरा आउटफिट डिसाइडेड है What up, Nelly? क्या हाल है? How's it going? पीडी कार्ड ऐड होंगी अभी ऑफ कोर्स ऐड होंगी बहुत चीज़ें का ऐड होना है भाई पहली बार लाइफ में मैं डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस स्किल्स इंटरेस्ट तो सर मेरी है बाइक ड्राइविंग में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा स्टार्ट करते हैं सर इसके अलावा कम हो गया अभी बट हम एक्चुअली लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो फटफट से काम होगा सारा हमारे ही लेने आ गए व्हाट ही वांट्स टू टेक इंटरव्यूज नहीं ये हमारे ही ले रहे हैं रेक्स सर हमारे लिए नहीं बोला मैंने बोला कि चलो सामने खड़े हो इंट्रो दो नाम बताओ स्किल्स बताओ इंटरेस्ट बताओ इसका नाम क्या है व्हाट्स योर नेम बाय द वे शर्लॉक ओके स्टिल आई हैव नॉट गिवन प्रॉपर स्किल एंड इंटरेस्ट का पूरा इंट्रो सही से दो हाँ तो बताया ना सर मेरे स्किल्स और इंटरेस्ट दोनों है बाइक ड्राइविंग में बाइक ड्राइविंग स्किल्स बहुत प्यारी है मेरी और मुझे अपना इंटरेस्ट भी है उसमें उसके अलावा पीडी क्यों जाओ रैली ड्राइवर बन जाओ क्या गाड़ी ड्राइवर रैली राइडर बन जाओ बाइक का इतना इंटरेस्ट है ज़ोमैटो में डिलीवरी कर लो इट माइट हेल्प यू आउट हाँ बट ऐसा है ना कि प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है मुझे और मैं सर्व भी करता आ रहा हूँ तो अपना प्रोफेशन अचानक से चेंज करना है मुझे इतना कुछ खास वो जज्बात नहीं है वहाँ पे पहला दिन कैप्टन मिल जाएगा नहीं कैप्टन रैंक के लिए थोड़ी ना है हम तो एक्सपीरियंस लेने और सर्व करने हैं और क्या जेम और रेप को टारगेट मत करो और ड्यूटी दो शांति से ठीक है ठीक है सर डेफिनेटली चलो अभी दास दादा आप भेजो जाके दो लोग रूम पे होने वाला है क्या नहीं दो लोग का भेज दो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ वी स्प्लिटिंग M1 and M2 कौन सा रूम मैं जा रहा हूँ Rex M1 M2 M1 M2 कर रहे हैं ठीक है इट्स इजी ठीक है ये दोनों में भेज दो फिर 3 करके ले रहे हैं मतलब हाँ बस टेक 2 people at one time 2 interviews at one time तो जैसे भी स्प्लिट अप करने को 3 एट अ टाइम भी हो सकता है वैसे वो बहुत अभी के लिए आई थिंक 3 कैंडिडेट है अभी नीचे ज्यादा लोग नहीं है ना तो अभी ये रखते हैं बाद में बढ़ा लेंगे अगर होगा तो ठीक है बिल्कुल अरे 40 के हो गया मतलब 2 लाख हो गया अरे कांग्रेट्स ब्रो 2 लाख हो गया ब्रो ओ भाई पैसे छाप रहे लोग 2 लाख हो गया हाँ ऑलराइट बैंक में ओके व्हाट ओके बोल रहा हूँ आई कांट से ओके सेंडिट कुछ सोच रहा है क्या हो गया सेंडिट क्या सोच रहे हो कुछ तो सोचा है सेंडिट ने मेरे को ठीक नहीं लग रहा मैं आया हूँ क्या सबसे पहले थोड़ी भी सबसे पहले तो मैं आया लॉस सैंटोस में दुनिया में यहाँ पे पीडी में वीडियो में तुम सबसे पहले आए हो सबसे पहले मतलब नॉट रिक्रूटेड मतलब यहाँ अच्छा आ गया घर से अपार्टमेंट से ऑलराइट गाइस स्विच अप रूम्स 3 in 3 किचन में आते भाई हाँ वो इसको राइट पसंद है बोला तो राइट में जाओ इसको लेफ्ट पसंद है बोला लेफ्ट one officer join us in the right room and then the other 3 can go in the left No. hello just give us a second alright Yeah, 1 second. Sorry.
I'll be coming in like 1 minute. Okay. 10 for, okay, I'll just start off with the introduction and stuff like that. Alright, so myself, Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my left is raved out as a colonel in the BCSO department, and we'll be taking an interview for today. There will also be Rex Davis coming, who is the game warden in the Rangers department. So, can you tell me your name? Hello, officers. My name is Khalifa Al-Fazza. Can you come slightly closer, talk slightly louder? Yeah, my name is Khalifa Al-Fazza. Khalifa Alpha. Yeah, Khalifa. Can you send either me or Rave a soft copy of your resume as well as medical certification? Yes, give me. No worries. कौन है ये? I'll be going to some other room with Chief. Are we taking 3 interviews at once? 10-4. 10 for, copy that. चीफ रूम पे भी ऑडिट को भेजना है क्या? 10-4. हाँ 10-4. Send it direct to dispatch. Anyone who's having issue with the job, let me know. Yeah, I've sent you the resume to Michael. Yeah, और शेडलॉक वुड में से किसी एक के साथ. Officer Jake? Yeah. Yeah, can you please check? Alright, जब तक मैं आपका resume एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन चेक करता हूँ, आप मुझे आपके बारे में कुछ बता सकते हो जो resume में नहीं है? Okay, so I was born in Dubai and I completed my schooling in Dubai, and then later on for my post 10th studies I went to Hyderabad, and I have completed my later studies in Hyderabad, and then I came back to Dubai. Can you talk slightly louder, please? Okay. Is it now? Yeah, now? it's much better. Yeah. So I was born in Dubai, and I completed my 10th till Dubai, and later on I went to Osmania University in Hyderabad and completed my graduation, and came back to Dubai to become a police officer. As my father was a police officer, I wanted to become one. So did you join the police forces in Dubai? Yeah. And eventually what was your rank out there? It was officer. I worked only 1 year in Dubai. Yeah. So I was joined as a cadet. You were an officer? Yeah, officer. So after cadet, it's an officer. This is the first rank. Okay, in your resume it says Dubai Police Department as a trooper. Okay. So in Dubai, it's the first rank is trooper. The name is trooper, but according to here, it's officer. So were you an officer or were you a trooper? I wasn't trooper as it's said in Dubai, but as per the hierarchy here, it's an officer. Okay. Okay, yeah. आपने वो डिपार्टमेंट छोड़ा क्यों? As there were not many criminal activities happening in Dubai, and I wanted more experience, so that's why I wanted to come to another country, in which I can get to serve the law, the country better, and get the law. Okay. So obviously one of our objectives is to reduce crime in Los Angeles, right? No, not crime in Los Angeles, but as it's comparatively more here than in Dubai. I'm saying one of an objective. There are many objectives of an officer. One objective of that is always to reduce crime, correct? Yeah. So आपने जो बोला कि you left the Dubai police force or whatever. मतलब अगर यहाँ पे if we reduce crime and make it a very low crime percentage, there are chances you will leave, right? No, it's not like that. It's like I am not even get experience of the basic things other than the pullover and the small crimes there. So I wanted to gain experience, that's why I came. So even if later on there is low crime rate, that will be Should good, update and every it's not other like I will interview be here if responses there is after the crime is interview low. answer, right? Okay. Do you you've applied for the SASP? Have you done any research about the SASP? Yeah. What is the full form of SASP? SASP is San Andreas State Police. क्या आप जानते हो SASP के अंडर there are सब डिपार्टमेंट्स? Yeah. कौन से?
It's LSPD, that is Los Santos Police Department, and there is BCSO Blaine County Sheriff Office, and there is another one is San Andreas Park Ranger. But I Okay. I don't know the It, abbreviation yeah, for it. it is SASPR. That is San Andreas State Park Ranger. अगर ये इंटरव्यू सही गया and eventually you do get selected and if you had a department of your choice आपका कुछ preference कौन सा होता है इन तीनों में से? My preference will be like LSPD if possible. Otherwise, whichever department you give, I'm okay with it. Why LSPD? Because like I have a city experience, right, and I want to learn the basics of the city first, then going to the outskirts of the city or the park ranger. So that's the main reason. If you guys think I'll be more suitable there, then it's okay. No issue. ओके आप मुझे बता सकते हो आपका लाइक जब आप दुबई में काम करते थे आप लाइक आपका दिन कैसा था क्या क्या करते थे पूरा दिन? It's like firstly in the morning there was a meeting with all the Leos, and then we will go out the patrolling and stuff. And it pretty much was the patrolling, like if there is any situation like there is vandalism or there is an harassment or something, or there is speeding, someone is speeding, then I have to pull over, that kind of stuff. Nothing major, just the basic thing. And at the end of the day there was another meeting showing the debriefing of what happened and any reports that have to be made, and then we were dismissed. Okay. Consider one thing. Okay, consider you're an officer. Okay. Consider I'm a civilian. Okay. I was speeding. Okay. You have pulled me over. Okay. And think of it that you and Rave sir are working together. Okay. But तुम साथ में नहीं हो मतलब he's doing his duty somewhere, you're doing your duty somewhere. Okay. So you're communicating with Rave on radio, giving him the call of the traffic stop, Okay. and then you're performing the traffic stop on me. Okay. So just like live do that thing, so I can understand if you know how to. Since you said you've done traffic stops and all of Okay. that. Okay. So I'm the driver, right? I'm the person driving the. You're solo, and I'm of no threat. I'm a normal, just overspeeding, nothing Okay, else. okay, okay. So firstly, I'll give a radio call, my call sign, performing a 1011 on the black sports car or whatever, and the passenger, no passengers, only the driver, and no additionals required. And then I'll do the pullover there, and like park the car at 45 degrees. So like, don't tell me. Like the thing is, like, assume you are on duty right now. Okay. So don't tell me I would do this, I would do this. Like, Okay, you have to do it. Like, you have to act as if it's an actual situation that's happening right now. So I will just have to give the radio call, right? Yeah, Or take your call sign as 401. Okay. 401 performing a 1011 on a black Porsche with no extra passengers and no additionals required near the street name. It's Khalifa Street, for example. Okay. Now you can continue with the traffic stop on me. Yeah. So I'll on the speaker, I'll tell the person to, can you please turn off your engines? And Okay. when the person turns My off his engine's engine, turned off. yeah, and I'll go to you and I'll Don't ask say you for good. Like that's the thing. Okay. Have the conversation Okay, I'll if approach- I'm actually in the car right now. Think of it. We are actually in the car. Okay, so can you please turn off your engine? Sure, and sir. My then- engine's off. Yes. Okay, and I have come close, and then can you please lower your windows, please? Sure. One sec. Yeah. There you go. My window's down. And do you know why I have pulled you over? No, sir. Like, why have you put me over? You were speeding, and you also jumped one red light. Oh, I'm sorry for that. I did not actually notice the red light. I might have sped a little too much because I was in a hurry. I had to go to the pillbox, so I wanted to like just go there quickly. But I mean, I didn't. I don't think I skipped a red light. Yes, you did. It was just before just you turned red. You was you jumped the lights, and also your speed was 80, whereas this road limit is 60. So you were about 20 kilometers per hour higher than the limit. I'm sorry for that. So I mean, I was just in a hurry because I had to go and get some medicines from the pillbox. But like, I won't repeat that. Can you please let me go to the pillbox fast? Can you please give me your license and registrations first, so I can look at it? Yeah, sure. 1 second. I have my registration papers and I have my ID card. I forgot my license at home, sir. That's not permissible, right? You have to carry your driving license while you are driving. I understand, but मैं अभी घर से ही आया and वो घर से मुझे मेडिसिन चाहिए था तो मुझे जल्दीबाजी में मैंने ID कार्ड दिया and ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया. Normally मैं
I do the other way around. I mean, I can show you my ID card. I have my registration papers. If you can just forgive me for the license this time. Okay, and what's the emergency? What do you need the medications for? It's actually my regular dose of medicine, sir. I have been prescribed by the doctor to have 3 tablets a day for lunch, after breakfast, lunch, and dinner, and that I'm out of that, so I need to go pick that up. So is it an emergency that you have to buy these medicines? I mean, sir, it's my lunchtime right now, so after lunch, if I don't eat my medicine, then my health might get spoiled. That's why I was in a hurry. But it can be delayed 10 to 15 minutes, right? So you would have brought your license with you. I agree, sir. It is my mistake, but yeah, it was just an emergency. That's why I forgot. I mean, I won't repeat it if you . Okay, this is the first time. That's why I'm giving you a warning. If I forgot you again, and if you are found on doing this again, then you will be charged with the fines and everything. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me go and sit in my car. When I give the police siren, then you can leave. Okay. All right, sir. All right. Okay. Have a nice day. Yeah. Thank you, officer. As soon as I leave, you have to communicate to Rave about the situation. Okay. So I'm after sitting in my car, I'll give it. This is officer. My call sign was 400, right? 401. Yeah. It's called 401. The 1011 is now code 4. Over. All right. Yeah. I'll just give you one. I'll just give you one information that is very important. Yeah. See, more or less, it was quite okay what you did. But one very important thing that every officer has to do once they are performing a traffic stop is you forgot to introduce yourself. Yeah. So And that that call sign, your badge, all of that is very, very important because a lot of people try to portray as an officer, but then that showcases you are one. So that is very important because in case you do something wrong, the civilians have a right to come and file a complaint. And with your call sign, with your name, they would come and file the complaint. But rest of it seemed okay, to be honest. So sorry for the mistake. That's not okay. I mean, that's fine. That I understand. I just thought I would tell you because the rest of it you did pretty fine with it. So I just thought I would tell you about this. So what other stuff you did in Dubai besides traffic stops and all of that? It was just the common calls to from 101? riders. One sec. 10-4, send it. Yeah, can you please whisper or be a little less loud? Actually, we 10-4. can hear in the chief office. Yeah, thank you. You can hear me, right? Yeah. Okay. So there were normal calls for vandalism if there was and there was a traffic, otherwise there was street local fights if there. So just the normal stuff. Okay. What is vandalism? Vandalism is when people try to destroy the public property. All right. Okay. Yeah. Since you have experience, I'll be just going in a little more detail to test your SOP. Yes, please. Do you know what reasonable suspicion and probable cause is? Yeah. Can you tell me? So reasonable suspicion is when we are in doubt that the person has committed a crime. So if I get a call that there is a possible drug dealing going on, and I go into the area, but I cannot see anyone doing the drug dealing, but I see a person who is exiting from that area. Mm-hmm. So I don't have a 100% sure and evidence that that person has committed the crime, but I have a suspicion that he might be there. So I can stop him and ask questions. If I think he probably might be the person, I can detain him for questioning. Yeah. And the probable cause is when I have a sure proof that that person was doing that. So I reach there in the location and can see the person doing the dealings for the drugs. So that is the person sure that the person has done the crime. So I can arrest him. Okay. What is chain of command? Chain of command is every person in the LSP and in the SASP has given a rank and a responsibility. So as a person, as an officer, I can't directly involve the higher command in a small or any question. So firstly, I'll reach up to my superior, who is one rank above me, about the issue or any situation, and if they deem it requiring attention of someone higher, they'll need that. So I can't directly go to the chief and say, okay, I have this discussion, can you please answer me? So that is not the way of the SSP. So the code of conduct has to be followed. Code of conduct. What is code of conduct? Sorry, chain of command. Sorry, chain of Yep. So now, what is code of conduct? Since you said the code of conduct has to be followed. The code of conduct is, we have to follow a certain way. So, if I have a question
So I'll directly ask. So I'll ask my FTO if I have any question, and if not, then the FTO will help me. If he has an issue, then he'll ask someone higher than him. But as an FTO is knowledgeable in these kind of thing, he'll answer it. So you're saying that you'll ask your senior, the senior will ask his senior that way? No. Like if I have to code of conduct, there is a procedure to be followed. So Mhm. if I have any questions, I won't get ask my senior or any other person who is my kind of a familiar friend of a police officer. I'll ask an FTO. So a code of conduct needs to be followed there. Won't that be following chain of command? Yeah, but like तो फिर the chain of command and code of conduct में फर्क क्या है? क्या करूँ यार हर्ष? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. What is match of force? Match of force is like the force we require to make the person or the criminal compliant. So if he is not answering or is not obedient to our call, so like if he's saying can you please stop, so he's running away, so that is like the match of force we have to do. So if that person is aggressive, we have to use the different level of forces on him. Okay. Yeah, so if a person is aggressive, or the person is physically aggressive, we can use less lethal method and use blunt impact or tackle him. Okay. But if the person is using a gun or something, then you have to use a match of force and use a weapon also to make him compliant. And the force of the force is like if he becomes compliant, will decrease the force also. Okay. Match the force with him. Yeah. Do you know about the 10 codes? Yeah. मुझे एक चीज़ बताइए 10 codes में कि if you know about burger shot जो बाजू में है, Yeah. if I perform a traffic stop there, I can easily tell Rave that Rave, there's a car in front of me, I'm performing a traffic stop at burger shot, just come here now. But we use 10 codes to say all of that. Q. First of all, we don't have that much of a time to say the whole sentences first thing, and we have 10 codes because they are like more of a secretive and only to us. So if we say the whole thing, then it will be a lengthy process rather than just giving the codes, as they are also like we don't want to also reveal any other person's what we are next to move is. So if that person might be a threat, so we can't give a felony call. Okay, there is a felony stop requiring additionals, that kind of thing. So that person may hear it and may become vigilant. The criminal may become vigilant and might run away or something before us catching. Okay. What's the difference between search and frisk? So search is that we thoroughly search the person if he has anything lethal, and we can clearly ask him, okay, what is this thing. But the frisk is like a pat down thing. We would just pat down the person from above his clothes and see if there's anything. If we find anything strange, like there is the thing seems like a weapon or something, we can tell him, okay, what is this, can you please show it to me, that kind of thing. Okay. Rave, you have any questions, sir? I just wanted to ask that what's your birthplace? Birthplace is Dubai. Okay, so are you weak in Hindi? No, I have studied in Usmania University. I know a little bit of Hindi. Little bit. Yeah, well, like not little bit. I can understand it, but saying it's a bit issue. Not that. like आप बोलने में थोड़ा problem. I can. मैं बोल अभी सकता बात हूँ. करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, okay? Okay. ठीक है, अभी आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई करो हिंदी में देने का, कि लाइक सिटी में आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे आपको, जो हिंदी में बात करेंगे आपसे एंड जो इंग्लिश में. जी. तो हमारा कॉप का हमेशा ये रहता है कि अगर हिंदी आ रही है तो हिंदी रिप्लाई देंगे, अगर इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश में रिप्लाई देंगे. हमें दोनों पता होनी चाहिए, राइट? जी, yes. ठीक है. तो And अभी also, like, आपसे I want to add that my mother was in Indian, so she was also for Hyderabad. That was the main reason. So, doing and studying in Hyderabad. Oh, nice. That's so nice. Yeah. ठीक है, तो अभी situations है कुछ, उस पे बात कर लेते हैं. Okay, let's assume कि आप कोड 1 पे हो. आपको कॉल आता है कि कहीं पे हाउस रॉबरी हो रही है. Okay. आप पहुंचते हो, आप एक बंदे को देखते हो, वो इधर से उधर भाग रहा होता है रोड पे. Okay. एंड वो किसी और हाउस में घुस जाता है जाके, जैसे ही आप देखते हो उसको, किसी भी लाइक अननोन हाउस में, ठीक है? Okay.
तो वो वहां पर पहले से सिविलियंस रह रहे होते हैं, उसके अंदर घुस जाता है। तो अभी इस सिचुएशन को आप कैसे अप्रोच करोगे? फर्स्टली मैं जो है तो एक रेडियो कॉल दूंगा saying okay there has been 1090D and I approached at 25 at the 1090D and sorry 23 at 1090D and there is one person Thank who you, has Matthew, for joining the fan club. this person is went into the other house requiring backup. So I gave a 1077 call and then I'll knock the door and tell the person मतलब मैं जवाब मैं हिंदी बोला ना हाँ मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ बाहर आ जाइए I'll give 2-3 knocks and tell the person कि आप बाहर आ जाओ and I'll hear if there is any commotion inside the house or not. अगर वो बंदा नहीं बाहर आ रहा है and I can still hear the commotion in the house तो जब तक मेरा बैकअप नहीं आता मैं ट्राई करूँगा कि वो बंदा बाहर आ जाए and compliant हो जाए and if not then जब मेरा बैकअप आ जाएगा then breach in करना होगा अगर वो बंदा कि तो नहीं ब्रीच इन लाइक वहां पर और भी लोग होंगे, जैसा मैंने कहा कि वो किसी भी घर में घुसा है तो हो सकता है उसके अंदर सिविलियंस हो, राइट? बट मैं देखा हूँ ना वो कौन से घर में गया है सो अगर वो सिविलियन क्या? होंगे तो दैट मींस दैट तो वो आप बंदा विदाउट क्रिमिनल वारंट ब्रीच इन कर सकते हो। बट वारंट नहीं कर सकते बट अगर वो बंदा अंदर थ्रेटन कर रहा होगा जो लोग रह रहे हैं तो मैं वेट नहीं कर वो सकता आपको ना नहीं पता, वो आपको नहीं पता कि अच्छा वो नहीं कर रहा पता है कि नहीं, एंड बाहर भी आपको सिर्फ भागते हुए दिखा है, दैट्स ओके इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। जो हाउस में रॉबरी हुई है वो हाउस अलग है, लाइक वो वहीं पर ही है, बट ओके वो भागते हुए दिखा है उसके आसपास। ओके ऐसे टाइम पे वो भागते हुए अपने घर में घुस गया, अपने नहीं, आई मीन किसी भी सिविलियन के घर में घुस गया जाके, कोई भी अननोन हाउस है वो। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे अप्रोच करोगे? तो फर्स्टली अगर वो उसका वो प्रोबेबल सस्पिशन तो यहाँ आता है बिकॉज वो बंदा मुझे दिखा है क्राइम सीन पर इवन अगर वो रहता है वहाँ पे सो अगर वो बंदा इनोसेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा कि मतलब जो भी मेरे जैसे आंसर्स करने बट अगर वो नहीं होगा एंड वो किसी और का घर तो होगा देन वो बंदा क्रिमिनल हो सकता है सस्पिशन है उस पर ओके, तो आपको उस पे रीजनेबल सस्पिशन होगा या प्रोबेबल कॉज होगा? अभी मेरे पास रीजनेबल सस्पिशन प्रोबेबल कॉज क्यों नहीं है क्योंकि मुझे उसे वो घर पे जहाँ से कॉल आया था वहाँ नहीं देखा हूँ सो आई कांट से दैट ओके दिस पर्सन ओनली कमिटेड क्राइम ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदे को आवाज़ आई होगी सामने वाले घर से एंड ही वाज जस्ट आउट देयर टू सी व्हाट हैपेंड हाँ, कुछ भी हो सकता है वो तो। हाँ ठीक है, तो अगर वो बाहर आ जाता है तो आप उसको लाइक कैसे फिर हैंडल करोगे? अगर वो बाहर आ जाए तो मैं पूछूंगा उससे कि लाइक व्हाट वर यू डूइंग आप बाहर क्या कर रहे थे उसका आईडी तो आप उसको पूछूंगा डिटेन करोगे या फिर विदाउट कफ्स उससे फर्स्टली बात मैं करोगे? क्वेश्चन करूंगा अगर वो मुझे दिखता है सस्पिशियस क्योंकि अगर वो घर उसका नहीं है वो घर में घुस चुका मतलब दैट मींस कि वो बंदा पॉसिबल रॉबर हो सकता तो है आप तो उसको आई विल कफ डिटेन हिम करोगे? उसको सब मैं जिप टाई लगा के डिटेन करूंगा एंड मिरांडा राइट्स भी सुनाऊंगा ओके, ठीक है सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर ऑफिसर चेक इफ यू वांट। No, no, I have no more questions. I'm quite clear with Okay. his understanding. Okay, All right, that's sir. it. Okay, thank you Mr. so much. Khalifa, right? You said? Yeah, Yeah, that's all for Khalifa. your interview today. Your response will be out soon, so you will come to know about the selection process further. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Have a good day. Thank you so much. राशि और कैंडिडेट्स हैं नीचे? ठीक है, भेज दीजिए प्लीज। सर आप अपडेट कर दोगे? मैंने कर बाद में दिया। अपना लिख दूंगा। कर दिया ठीक है, मैं, तो हाँ, मैं बाद में अपना लिख हाँ। तो वैसे सही है। हाँ, हाँ। ऑफिसर है ये तो। इसका एक्सपेक्टेशंस कम था। हाँ वही, मेरे को भी ऐसा लगा। नहीं, उसके हिसाब से। उसके हिसाब से जो उससे एक्सपेक्ट किया मैंने वही लिखा है, नहीं तो मैं थोड़ा हायर अच्छा। देता। हाँ और कितने कैंडिडेट्स हैं नीचे सर? 3. 10-4, कॉपी दैट। Correcting 4. 10-4। खलीफा इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्या रे? क्या रैंक मिला? अरे यार ये सब मत पूछो यार। आज मेरा बहुत ज़्यादा काम है यार, पता नहीं काम कैसे करूँगा। थक गया इंटरव्यू देख देकर, मैं थक गया इंटरव्यू ले लेकर।
इंटरव्यू पोस्ट में फ्लैश भाई वही तो मैं अभी के लिए मैं बहुत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं कम कर रहा हूँ। अब केजुअल कैसा लो है रैंक टाइम पास कर। आई एम डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ आरपी। वो वाला सर्च ना तभी वो बोर्ड बता रहे थे Hello sir, good afternoon. हेलो, आपका नाम? Myself Jonathan Costa. Alright, Mr. Jonathan, my name is Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my left is Rafe Dart. He's a colonel in the BCSO department. हम आपका आज इंटरव्यू लेने वाले हैं. Before we start off this interview, क्या आप हम में से किसी को भी आपका medical certification as well as resume भेज सकते हो? Yes sir, I'll forward you it. इससे नाम क्या बोला था? इससे भी नाम क्या बोला था? Jonathan कुछ ना Jonathan Costa. Jonathan Costa. हम इतना प्रो हो गया कि हम भी इंटरव्यू देंगे से सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा इतना दिख के जब तक मैं आपका रेज्यूमे एंड मेडिकल सर्टिफिकेट देखता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो समथिंग अबाउट योर सेल्फ जो आपके रेज्यूमे में नहीं है? Sir, myself Johnson Costa. I have been part of the Royal Canadian Mounted Police for 8 months. I have served there from starting from the cadet and I have सर ये सब मैं आपका रेज्यूमे पढ़ के बता सकता हूँ, राइट? ऐसा मुझे जानना है आपके बारे में जो आपके रेज्यूमे में नहीं है. Like I know that you were a cadet, you got promoted to trooper first class, senior trooper, you worked at the Royal Canadian Mounted Police. I know that you have skills of that you mentioned, I know your address, I know all of that. But I want to know something that is not there, something जो मुझे पढ़ के like ना पता हो. Regarding that sir, any specific no sir, I have written everything in my resume. आपको लगता है आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ लिखा है रेज्यूमे पे? I'm asking about you in general, about you as a person. Oh, you are asking about me like that. Yeah, something about you. So sir, I was born in Canada, Toronto. Okay. And I used to live with my parents. My father was an officer also at the Royal Canadian Mounted Police. He served there till the age of 60. Afterwards, he died there. Just one sec, hold on. 101 to Rex. Said it. Can you whisper, please? 10-9. Can you whisper, please? 10-4. Continue. So sir, he died there because of natural cause. Okay. while Sorry in for that. departments. So I've joined the department afterwards, as my mother also wants me to be an officer. And, मैंने रिजाइन इसलिए किया उस लास्ट डिपार्टमेंट से cause मेरी जो मदर थी वो काफ़ी सिक थे, लाइक मई 2021 के टाइम की बात है. तो आई रिजाइन क्योंकि मेरे को उनका भी ख्याल रखना होता था एंड मैं अपनी ड्यूटी पे फोकस नहीं रख पाता था, इसलिए मैंने रिजाइन दिया. Okay. और उनको फिर काफ़ी
स्पेशल हॉस्पिटल्स वगैरह में लेके गए डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के लिए। शी हैड कैंसर सर, दैट्स ओके। व्हाई। So she also passed away 4 months ago. So I was little bit depressed. So मैं थोड़ा like travel वगैरह गया थोड़ा डिप्रेशन से दूर होने के लिए and all stuff. Afterwards I have came here to Los Santos. So I feel like कि I've overcome the depression and I think I can serve again in Los Santos. जो टोरंटो में जो ये रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है जहाँ पे आप काम करते थे पहले, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार आई डन सो मच ड्यूटी देयर, माइट एज वेल गो देयर एंड गेट रीइंस्टेटेड? No sir. ऐसा क्यों? सर क्योंकि अगर मैं वहाँ वापस जाता तो मेरे को वही पुरानी चीज़ें ख्याल वापस आते कि जो मेरे पेरेंट्स थे उनके साथ रहता था एंड वो सब। सो हो सकता था कि मैं अपनी ड्यूटी वहाँ पे शायद ढंग से ना दे पाता एंड कुछ और कॉजेज होते हैं जिससे कि मेरे को वापस से ड्यूटी छोड़नी फेयर पड़ती, इनफ, तो मैं ठीक ऐसा है। नहीं चाहता था। और उधर से लाइक बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे काउंटीज़ हैं, और लॉट ऑफ प्लेसेस आर देयर जहाँ पे लाइक आप अपना ड्यूटी कर सकते हो, बट वाई लॉस एंटोस? सर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था मेरे को कि आप लाइक मैं जब घूमने जा रहा था तो उसने सजेस्ट किया था मेरे को कि आप यहाँ घूम के आइए एंड यहाँ आपके जगहें जो हैं आप टूरिंग प्लेस हैं वगैरह तो अच्छे लगेंगे। सो जब मैं लास्टली अभी लॉस सैंटोस आया 2 वीक्स पहले तो मेरे को इधर अच्छा लगा एनवायरनमेंट वगैरह। सो आई हैव ट्राइड हेयर और कहीं पे मैंने ऐसे ट्राई नहीं करा था एक्चुअली। एंड उस टाइम पे जब मैं बाकी जगह भी ट्राई करा तो आई वाज इन डिप्रेशन। सो मेरा उस टाइम में मन नहीं किया कि वहाँ पे मैं अप्लाई करूँ। ऑलराइट। यहाँ आने से पहले क्या आपने रिसर्च किया अबाउट द एसएसपी? या सर यहाँ पहुँचने के बाद एक्चुअली मैंने रिसर्च किया ओके। जब मैं फॉर्म्स अप्लाई क्या किए थे रिसर्च किया? सिक्योरिटी लाइक से। व्हाट इज द एसएसपी? क्या आपको उसके सब डिपार्टमेंट पता है? लाइक यस सर, आई नो एसएसपी सैन एंड्रियास स्टेट पुलिस। यहाँ पे आई गेस जितना मैं रिसर्च किया अकॉर्डिंग टू दैट 3 डिपार्टमेंट है। फर्स्ट इज एलएसपीडी लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट, सेकंड इज बीसीएसओ ब्लेन काउंटी शेरिफ ऑफिस एंड थर्ड वन इज सैन एंड्रियास पार्क रेंजर्स। आई एम सॉरी ऐसे ऐसे पीआर ही है या सैन एंड्रियास स्टेट पार्क रेंजर है? आई एम कंफ्यूज्ड इन सैन दैट। एंड्रियास स्टेट पार्क रेंजर। ओके सर। अगर आप सेलेक्ट हो गए एंड आपको एक लाइक चॉइस मिला टू पिक वन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ योर प्रेफरेंस, क्या होता? Sir, if I get selected, so my preference will be park rangers. The reason for that is because क्योंकि park rangers will be a newer department for me. मेरे को chance मिलेगा कुछ नई चीज़ें सीखने का उस department में। Cause जो मैं पहले रहा था वो kind of you can say city भी था and mounted areas में भी होता था, तो हमें like we have to ride the horses to get somewhere क्योंकि काफ़ी hills वगैरह एरिया होती, तो मेरे को like BCSO का kind of you can say experience है and city का भी experience है। सो पार्क रेंजर्स विल बी अ डिफरेंट थिंग फॉर मी। सो मेरे को नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा एंड मैं थोड़ा एक्साइटेड भी रहूँगा उसके लिए थोड़ा। ठीक है। रेव, कैन यू जस्ट चेक ऑन हिज एसओपी? या तो सर आपका लाइक लास्ट एक्सपीरियंस सीनियर ट्रूपर तक था? यस सर। ठीक है, तो उसी के भी आप पे पूछूंगा मैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो सर एसओपी से तो फैमिलियर होंगे आप? यस सर। क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं? सर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सर ये किसी भी डिपार्टमेंट में बनाए जाते हैं ताकि एग्जांपल के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में एसओपीज का काम है ताकि सारे ऑफिसर्स को एक तरीका हो काम करने का, सबको पता चले। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी एक ऑफिसर के काम करने का तरीका दूसरे से अलग ना हो, सभी एक प्रॉपर वे में काम करें डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, तो ये सिविलियंस को पता होते हैं एसओपीज? नो सर, ये जो डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स होते हैं दे नो। ठीक है, तो इसमें एक बेसिक चीज होती है बहुत ही रीजनेबल सस्पिशन प्रोबेबल कॉज। इसका एक डिफरेंस नहीं, इसका डिफरेंस एंड एग्जांपल एक ओके। सो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ सर। लेट्स सपोज मैं लाइक नॉर्मल घूम रहा हूँ सर, मैं सॉरी नॉर्मल पेट्रोलिंग पे हूँ मैं। सो मैं किसी पर्सन को देखता हूँ जो कि थोड़ा सा रेकलेस ड्राइव कर रहा है, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहा है, लेफ्ट राइट लेन चेंज कर जा रहा है बार बार। सो आई हैव अ रीजनेबल सस्पिशन ऑन दैट गाय कि ड्रंक एंड ड्राइव का केस हो सकता है, ठीक है? रीजनेबल सस्पिशन इज लाइक लॉजिकल बिलीफ जो कि आपको सामने चीज़ें देख के पीसीस कलेक्ट करके आप अपने दिमाग में बनाते हो।
ठीक है, अच्छा। तो मैंने उसको देखा रेकलेसली ड्राइव कर रहा है, लेन चेंज कर रहा है, लाइट फॉलो नहीं कर रहा है, सो या इन दैट मैं उसके पास जाऊंगा, ट्रैफिक स्टॉप परफॉर्म करूंगा एंड उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करूंगा, उसका ब्रेथलाइज टेस्ट करूंगा। प्रोबेबल कॉज सर होता है अगर मैंने उसका ब्रेथलाइज टेस्ट वगैरह किया और मेरे को मिल गया कि लाइक उसका अल्कोहल लेवल हाई है, सो आई हैव द प्रोबेबल कॉज, इट मींस आई हैव द एविडेंस कि ड्रंक एंड ड्राइव का केस है। सो या इन रीजनेबल सस्पिशन अगर मेरे को वो नहीं मिलता है, सो मान लो उसका ड्रंक एंड ड्राइव का केस नहीं था, वट एवर रीजन था जो भी वो ऐसे कर रहा था, तो उसके लिए मैं इन्वेस्टिगेट फर्दर कर सकता हूँ, उससे बातचीत कर सकता हूँ, पीडी बुला सकता हूँ उसको कि आइए सर आप सी मैं ऐसे तो रेकलेस कमाल ड्राइव क्यों कर कूल रहे डाउन थे, लगा दूँ, उसके लगा लिए सकता मैं हूँ। आपको डिटेन कर रहा हूँ। एंड अगर मेरे को वो अल्कोहल लेवल उसका हाई मिलता है, सो या आई हैव द एविडेंस एंड आई कैन अरेस्ट दैट गाय। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल Yeah, how सस्पिशन do एंड you प्रोबेबल कॉज respond सर। like to the robbery scenario at first? अच्छा, तो आपने ये कहा कि Just आपको पहले तो stand बिलीफ गया होता इनको है ऐसा कोई कोई भी गोली लेफ्ट चला राइट कार चलाएगा तो वो ड्रंक एंड ड्राइव था, तो आपने उसको रोका। उस पे क्या किया आपने? 10-11 किया या फेलन किया? ट्रैफिक स्टॉप सर, बेसिक ट्रैफिक स्टॉप किया 10-11। ओके, तो आपने उस पे 10-11 करा, फिर आपने उससे हम्म। पूछताछ करी। आपको लगा अगर कुछ उसने रेकलेस ड्राइविंग करी है तो आपने पीडी बुलाओगे आप उसको। उसका क्या मतलब था? नहीं, मैं उसको अगर उसने रेकलेस ड्राइव वगैरह करा एंड उसने अगर ड्रंक एंड ड्राइव का केस नहीं, अ, अल्कोहल लेवल उसका नॉर्मल है, सो मैं उसको पीडी पे बुलाऊंगा, लाइक ऑफिस पुलिस डिपार्टमेंट पे बुलाऊंगा उसको कि आपको डिटेन किया जा रहा है। तो आप बुलाओगे थोड़ी उसको, तो लेके जाओगे ना उसको, आप बुलाओगे या मतलब। सॉरी सॉरी सॉरी, अब लेके हाँ जाऊंगा जी, हाँ मैं जी, अपने वही मैं साथ। समझ नहीं पाया था कि आप हाँ हाँ, उसको उस सॉरी टाइम सॉरी। छोड़ दोगे फिर बाद नहीं में नहीं 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 बुलाओगे या नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो प्रोबेबल कॉज एंड रीजनेबल सस्पिशन में दो और चीजें होती हैं, डिटेनिंग एंड अरेस्टिंग। हम्म। वो किस चीज में कैसे होती है और कैसे आप करोगे उस चीज में, वो थोड़ा सा समझा दो। फॉर फर्स्ट वन इज डिटेनिंग सर, डिटेनिंग जो होती है वो रीजनेबल सस्पिशन पे की जाती है। डिटेनिंग की जाती है कोई भी जो आपने पर्सन पकड़ा है, लाइक उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम डिटेन करते हैं। उसके अंदर उसको हैंडकफ्स बनाए जाते हैं एंड उसको बोला जाता है, मिरांडा राइट्स उसको भी सुनाए जाते हैं एंड उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। मीनवाइल अरेस्टिंग, अरेस्टिंग में हमारे पास जब प्रॉपर एविडेंस होता है, प्रोबेबल कॉज होता है, तो हम पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं एंड उसको भी मिरांडा राइट सुना के हम उसके जो भी चार्जेस एंड फाइन वगैरह जो भी होता है वो उसको बता देते हैं, उसको वो फाइन करके उसको सेल्स भेज देते हैं। अच्छा, ऑफिसर जी इसमें कुछ पूछना है आपको? No, you can just keep continuing as of now. Like I'll just take a ठीक है, minute. Yeah. ओके। आपको अमेंडमेंट्स पता है जो एसओपीज में होते हैं वो? सॉरी सर, बट ओके, हमारे क्या डिपार्टमेंट क्या में लग अमेंडमेंट्स ठीक है, कोई बात नहीं नहीं। पाए आपको जाते। क्या लगता है कि कितने अमेंडमेंट्स होते होंगे? Sir, it will be a guess. I have no idea regarding the amendments, so I'll not to say अच्छा, anything अमेंडमेंट्स about का it. मतलब पता है आपको? सर amendments कुछ हायर एसओपीज, जितना मैं नाम से समझ हाँ पा हाँ, रहा हूँ, जो ये पता हायर है आपको। एसओपीज के रिगार्डिंग बनाए जाते हैं, ये आई गेस से डीओजे एंड पीडी हाई कमांड रिगार्डिंग उनके लिए होते हैं। जो भी आप एसओपीज क्रिएट करते हैं पीडी में, वो किस रिगार्डिंग क्रिएट होंगे या कोई भी एक्शन कैसे ले जाएंगे उसके रिगार्डिंग बनाए जाते हैं अमेंडमेंट्स। सिविलियंस के लिए नहीं होते? हाँ, सिविलियंस के लिए भी हो सकते हैं सर ये। सकते हैं या होते हैं? नो आइडिया सर, मैंने कहा ना मैं आइडिया लाइक नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं मेरे को सर। तो सर बेसिक राइट्स जो होते हैं जैसे ह्यूमन राइट्स हो गए, और जो भी बेसिक राइट्स होते हैं एक सिविलियन के, आपने हम्म मिरिंडा राइट बोला, हम्म। तो वो मिरिंडा राइट लाइक क्या बेसिक राइट है वो सिविलियन का? क्यों हम सुनाते हैं किसी को? सर मिरांडा राइट्स क्या होते हैं एक्चुअली, जो भी हम किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी सस्पेक्ट को पकड़ के लाते हैं, तो उसको हम सुनाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी पीडी में आने के बाद या जैसे उसको हम जब कफ करते हैं, उसके बाद वो जो कुछ भी बोलेगा वो हम कोर्ट में उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। सो उस चीज़ के बारे में उसको पता हो, सस्पेक्ट को या जो भी सिविलियन है, उसके लिए हम मिरांडा राइट्स उसको सुनाते हैं सर। ठीक है, मान लेते हैं कि एक सिचुएशन देता हूँ आपको। हम्म आपने किसी को अरेस्ट किया, उस टाइम पे हम्म आपने उसको मिरिंडा राइट्स नहीं सुनाए। हम्म आप अंदर आ गए, उससे इंटरोगेशन सब कुछ हो गया, उसको बस आप बस प्रोसेस करने ही वाले हो, हम्म एंड लास्ट में आपको एंड मोमेंट पे पता चलता है कि मिरिंडा राइट्स तो आपने सुना ही नहीं। हम्म। तो अभी आपका क्या क्या अप्रोच होगा उस जगह पे?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी अगर मैंने उसको मिरांडा राइट्स नहीं सुना है तो मेरे पास वो सारे एविडेंसेस है जो उसने क्राइम कमिट के टाइम पे जो मेरे को कलेक्ट किए थे थ्रू माय डैश कैम और मेरा जो भी बॉडी कैम है एंड पीडी में लाने के बाद जो भी सीसीटीवी कैमरास है उनकी फुटेज प्लस अगर मैं इसको इन्वेस्टिगेशन रूम में ले गया हूँ तो वहाँ की रिकॉर्डिंग सर चलती रहती है सो उसकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास मैं पीडी की रिकॉर्डिंग? इन्वेस्टिगेशन रूम में जो है अगर मैं अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ले गया हूँ तो तो वो वो आप यूज रिकॉर्डिंग कर एविडेंस सकते हो? यूज़ मैं नहीं कर सकता बट मैं बता सकता हूँ लाइक मेरे सीनियर्स को कि मेरी गलती हुई है आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बट दीज आर द एविडेंस उसके रिगार्डिंग जो मेरे हायर ऑफिशियल्स हैं और वो हैं वो डीओजे से बात करके कुछ बता सकते हैं तो आप उसको प्रोसेस करोगे या नहीं करोगे? उसके जितने भी लाइक जो पहले का क्राइम कमिट किया है उसके रिगार्डिंग के जितने मेरे पास एविडेंस है उस बिहाफ पे मैं उसको प्रेस करूंगा उसके कोई एडिशनल चार्ज है मान लो उसको मैं पीडी लाया एंड उसने किसी ऑफिसर को डिसरिस्पेक्ट कर दिया अभी उसका एविडेंस हम मैंने उसको मिरांडा राइट्स नहीं सुनाए थे तो उसका एविडेंस हम उसके सामने पेश नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं उसको फाइन नहीं करूंगा उसका चार्ज ऐड नहीं करूंगा जो उसका प्रीवियस क्राइम है उसके लिए मैं ठीक उसको है, चार्ज ऐड कर ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि आप 10-11 पता है आपको क्या होता है? दूंगा या ट्रैफिक स्टॉप से हाँ जी, तो आप मान लेते हैं कि एक ट्रैफिक स्टॉप परफॉर्म कर रहे हो किसी कार पे हम्म ओवर स्पीडिंग के लिए एंड आपको उस कार में डैशबोर्ड पे एक गन दिखती है हम्म एंड वो बंदे मतलब हाथ बाहर करके लाइक होता है ना कि खिड़की से हाथ बाहर निकाल लिया उसने आपने जैसे ही 10-11 ओके परफॉर्म किया तो आपने ओके इंजन ऑफ करवाए तो उसके बाद आपकी अप्रोच क्या होगी उस सिचुएशन में? इस अप्रोच कराया तो सर मैं उन लोगों को कहूँगा कि अपनी गाड़ी में ही बैठे रहिए एंड मैं सबसे पहले अपना एक बैकअप बुलाऊंगा इमरजेंसी बैकअप कॉज दे हैव अ वेपन इन देयर व्हीकल तो इट विल बी अ फेलनी स्टॉप आफ्टर दैट मैं अपनी 2 गाड़ियाँ और बुलवाऊंगा एंड 3 गाड़ियों के साथ मैं फेलनी स्टॉप परफॉर्म करूंगा उनकी व्हीकल पे अच्छा, आप ये कह रहे हो कि किसी भी लाइक व्हीकल में अगर गन है तो आप फेलेनी करोगे उस पे? फेलनी स्टॉप करेंगे सर एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेंगे ऑल्दो अगर वो उसकी लाइसेंस वेपन नहीं तो छोड़ देंगे ठीक है, अगर आपने लाइसेंस वेपन फेलेनी रजिस्ट्री नाम बट लिया फेल फेलेनी, फेल हाँ जी, क्यों करते हैं हम फेलेनी? फेलनी स्टॉप सर ट्रैफिक स्टॉप एंड फेलनी स्टॉप में लाइक डिफरेंस होता है ट्रैफिक स्टॉप इज लाइक डिफरेंस नहीं, फेलेनी क्यों करते हैं हम? फेलनी सर किया जाता है किसी मेजर क्राइम के रिगार्डिंग या मेजर आपको जब पता है प्रीवियसली नोन क्राइम अगर किसी सस्पेक्ट ने कमिट किया है एंड आपको उसके रिगार्डिंग इन्फो है कि ये उसकी व्हीकल है या आपने उस पर्सन को स्पॉट किया है कहीं पे रोड पे या आपको अपनी सेफ्टी के लिए अगर आपको ओके, किसी सिविलियन को रोका एंड आप लोग पर्सनल सेफ्टी के लिए अगर आपको लग रहा है कि देर आर लिटिल बिट चांसेस कि वो आपको हार्म कर सकता है सो आप यू परफॉर्म फेलनी कि अगर आपको किसी भी तरह से उससे खतरा है तो आप फेलेनी कर दोगे? हम्म तो सिर्फ फेलेनी कार से हो सकता है या फिर एक पैदल भी हो सकता है, लाइक ऑन ग्राउंड? आप बिना कार के हो अगर तो आप फेलेनी कर सकते हो या फिर सिर्फ कार के साथ ही कर सकते हो? no sir क्योंकि like in आपकी my previous डेफिनेशन के हिसाब department से, हाँ हाँ, my in my previous department we never performed a felony on foot neither उसके regarding मेरे को नहीं पता था सर I'll say indirectly सीनियर ट्रूपर हो आप, राइट? हाँ तो I आपको आपने ट्रेनिंग प्रेस कंप्लीट किया होगा, पहले कैडेट हो yep गया, sir फिर आपने एक और yes sir रैंक, yes फिर sir उसके बाद एक और रैंक, ऐसे करके बढ़े ना आप? हम्म तो आपका अभी तक चलो ठीक है फेलेनी हुआ नहीं किसी सस्पेक्ट पे, बट फिर भी हमें सस्पेक्ट ट्रेनिंग में सिखाया ट्रेनिंग जाता में है। सिखाया जाता है सर चीजें सिखाई जाती है उसमें आई एंड completely understand your point also so like on foot felony I'll not say properly it a felony क्योंकि हमको जो ट्रेनिंग में चीज बताई गई थी वो नॉर्मली ऑन फुट सस्पेक्ट के या किसी भी रिगार्डिंग के लिए स्टॉप कैसे किया जाता है या बातचीत के लिए उसको कैसे हैंडल किया जाता है वो सब बताया गया था अगर उसको ही ऑन फुट felony कहते हैं सो यस सर इट विल बी ऑन फुट felony एंड आई थिंक आई फॉरगॉट दैट जब मेरे को ट्रेनिंग में सिखाया गया था ठीक वो है, शायद चलो आपने फेलेनी वैसे कार से किया है कभी? यस सर तो कैसे किया था आपने और किस क्राइम के बेसिस पे किया था? सर एक प्रीवियसली क्राइम सस्पेक्ट था सो उसका लाइक फेस देख लिया गया था ऑफिसर्स ने बट ही मैनेज टू एस्केप अर्लियर ड्यूरिंग द क्राइम सो आफ्टरवर्ड्स लाइक आफ्टर 2 to 3 days हमें वो मिलता है लाइक ऑन द रोड सो वी परफॉर्म द felony on that suspect and हाउ टू कैसे परफॉर्म करता? फेलनी फेलनी के लिए सर सबसे पहले तो बैकअप कॉल दिया जाता है डिस्पैच पे कि वी हैव साइटिंग ऑन डैश डैश सस्पेक्ट उसी क्राइम में इन्वॉल्व था सो वी नीड अर्जेंट 78 एट द लोकेशन
लोकेशन डिस्क्राइब कर दी कितने जाती व्हीकल्स सर। चाहिए आपको फिलने के लिए? मिनिमम 3 व्हीकल्स चाहिए थी सर। एंड ठीक है। जो हमको डिपार्टमेंट में बताया गया था, लाइक 3 व्हीकल्स को एज अ ट्री शेप में पोजीशन किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद आपने उसके बाद व्हीकल को रोक लिया, टी शेप बना लिया। ट्री अभी शेप में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो प्राइमरी व्हीकल होता है, जैसे कि प्राइमरी में लेट सपोज मैं प्राइमरी में हूँ, ठीक है, एंड सेकेंडरी मेरे लेफ्ट है, टर्शियरी मेरे राइट है। तो सबसे पहले तो मैं सामने वाले Rebel व्हीकल 2000, को you कहूँगा can कि send one अपनी more गाड़ी to का इंजन chief's ऑफ कर office. दीजिए। तो वो इंजन ऑफ करेंगे, उसके बाद मैं उनको हाथ ऊपर करके बाहर आने को कहूँगा। तब तक कोई भी ऑफिसर हमारी गाड़ी से निकलेगा, क्योंकि अगर वो मेरी कमांड्स फॉलो नहीं करते, सो या वी नीड टू बी रेडी फॉर द चेस। सो सबसे पहले मैं उनको कहूँगा अपने गाड़ी का इंजन ऑफ कर दीजिए, हाथ ऊपर करके बाहर आइए। जैसे ही बाहर आएंगे मैं उनको कहूँगा स्टे वेयर एवर आर, डोंट ट्राई टू मूव। और उसके बाद मैं अपने सेकेंडरी को कॉल दूंगा कि ऑन द काउंट ऑफ 3 हम बाहर आएंगे। टर्शरी बाहर नहीं आएगा सर, सेकेंडरी एंड प्राइमरी जिसमें मैं हूँ हम बाहर आएंगे। वाइल पॉइंटिंग द वेपन्स ऑन देम, अपने जो भी क्लास 1 वेपन्स हैं हम वही प्रेफर करते हैं जनरली। सो वो पॉइंट करते करते हम बाहर आएंगे अपनी गाड़ी से, उन पे पॉइंट करेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में है उसको मैं कह दूंगा कि जो सेकेंडरी है वो ड्राइवर साइड की तरफ जाएगा, ड्राइवर साइड को तरफ को खड़ा रहेगा, जाएगा नहीं। एंड मैं राइट साइड में जो पैसेंजर सीट पे उस पे जाऊंगा। टर्शरी गाड़ी से इसलिए नहीं निकलेगा इफ इन केस दे ट्राई टू गेट इन देयर व्हीकल बैक, सो टर्शरी विल गो फॉर द चेस। सबसे पहले वो प्राइम यूनिट बन जाएगा चेस की, इसलिए ओके, टर्शरी गाड़ी में बैठा रहेगा। अभी आपने बोला कि आप सबसे पहले रोकोगे, उसके बाद आप गाड़ी का इंजन ऑफ करवाओगे, उनको बोलोगे हाथ बाहर करके बाहर आ जाए, इंजन ऑफ करके। उसके बाद आप बाहर निकलोगे एंड दैट्स इट, उसके मतलब आगे बाद जो भी आपने उन बताया। हाँ ठीक है हाँ ठीक है, वो समझ गया मैं। ठीक है, यही बताया ना आपने? यस सर। ठीक है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है? नहीं सर, एंड में बस ठीक है, उसके ये that's it. कि उनको पीछे ठीक है, एंड बुलाएंगे। नहीं, एंड नहीं, एंड नहीं, ओके पहले की बात करी थी मैंने। ठीक है, चलिए, ओके। ओके अभी ओके। मेरे को ये बता दीजिए, एक सिचुएशन है इस पे। अगर मान लेते हैं एक स्टोर रॉबरी हुई, दो लोगों ने मास्क पहना हुआ है, वो स्टोर रॉबरी एक कार में हुई है, जो कि लाइक पहली बार में एस्केप हो गई हमसे, बट दूसरी बार में कहीं पर बैंक के पास दिखी है। अभी हमने उस पे 10-11 करेंगे, फेलनी करेंगे, एंड उसके अंदर जो लाइक दो मास्क वाले लोग थे, उनकी पूरी कॉस्ट्यूम एंड मास्क वास्क सब चेंज है, लाइक बिना मास्क के हैं वो अभी। तो इस ठीक है, मोमेंट पे हम उन पे क्या करेंगे, लाइक उन पे क्या फेलनी होगा? परफॉर्म होगा सर उन पे, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द फेलनी those civilians will be detained for investigation as जो व्हीकल है वो इन्वॉल्व थी क्राइम में। तो व्हीकल को हम पीडी लेकर आएंगे एंड उन दोनों के साथ इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किसकी व्हीकल है, कहाँ से मिली, कब से चला रहे हो ओके, तुम रिगार्डिंग फोर्स ऑफ एस्केलेशन क्या होता है? फोर्स ऑफ आई गेस escalation of force, I mean to say, you mean to हाँ, say like एस्केलेशन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ एस्केलेशन, हाँ बताइए आप। okay okay। So escalation of force is like to upgrade your force। like example के लिए there are 5 level of forces sir। first of all is your presence, second is your voice, third one is your physical force, fourth one is your non-lethal, and fifth one is your lethal। so escalation of force is that like किसी आप person से through second level of force बात कर रहे हैं through voice, ठीक है, बट वो आपसे बात नहीं कर रहा है, लाइक समझ सकते हो आप कि वो सस्पेक्ट है। ओके, सो यू आर ट्राइंग टू कॉल हिम डाउन कि आप रुक जाइए सर, मेरे से बात कीजिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, रुक जाइए, सेल्स में लेके जाएंगे आपको उसके रिगार्डिंग वट एवर। बट ही इज़ नॉट, मान नहीं रहा वो मेरी बात। सो उसके लिए मैं अपना एस्केलेशन ऑफ फोर्स करूँगा, मैं फिजिकल फोर्स का यूज़ करूँगा उस टाइम पे। आई ट्राई टू होल्ड हिम, आई लाइक ट्राई टू होल्ड हिज हैंड्स और ट्राई टू टैकल हिम टू स्टॉप हिम। तो दिस इज एस्केलेशन ऑफ फोर्स सर। एंड अगर वो तभी भी नहीं मानता, वो भाग रहा है उधर, सो आई अगेन एस्केलेट अ फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं परमिशन लूंगा अपने जो भी सीनियर है, सीनियर ठीक है, ऑफिसर इन द कमांड, एंड मैच ऑफ चेस भी फोर्स कर क्या होता सकता हूँ। मैच ऑफ फोर्स इज लाइक मैचिंग द फोर्स जो लाइक सामने वाले यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए सामने वाले सस्पेक्ट्स हैं वो वॉइस से बात कर रहे हैं, चेज वगैरह में है किसी में, तो like it's regarding their voice, they are not complying with us, so we are just matching the force with the voice कि हम उनको भी वार्निंग दे रहे हैं कि सरेंडर करना है और you have to face the consequences। उसका दिस इज मैच ऑफ फोर्स। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद ऑफिसर जी if you wanna ask anything। So you are off duty at a restaurant, sir। the owner recognizes you as the police officer that patrols the neighborhood।
मतलब आप आसपास घूमते हो उसके रेस्टोरेंट के, ठीक है। और ओनर बोलता है गुड जॉब, आपको लाइक रोज शाबाशी देता है लाइक दैट, ठीक है। ओके। एंड आपको लाइक बोलता है कि मेरा रेस्टोरेंट सेफ रहे लाइक दैट। एंड जब भी आप उसके यहाँ से खाना लेने जाते हो तो आपका खाना वो फ्री में कर देता है। तो उस टाइम पे आप मतलब उससे फ्री में खाना लोगे या फिर कैसा, एज अ गिफ्ट, लाइक एज अ गिफ्ट नहीं, एज अ प्रेज, या फिर कैसा उस टाइम पे कैसे अप्रोच होगा आपका? उस टाइम पे सर मैं उसको मना ही करूँगा कि कहूँगा मैं आई विल नॉट टेक द फूड इन फ्री, आई विल पे यू द अमाउंट। एंड मैं थैंकफुल रहूँगा कि जो उसने मेरी प्रेज करी अपने पूरे रेस्टोरेंट में सबके सामने एंड ऑल, इसलिए मैं तो थैंक्स गिविंग रहूँगा ही उसका। बट आई विल नॉट टेक द फूड फॉर फ्री, बिकॉज वो भी अर्न कर रहे हैं सर अपने ज़िंदगी के लिए, लाइक डेली लिविंग के लिए वो अर्न कर रहे हैं उसी के थ्रू। एंड बट एज अ गिफ्ट देना चाह रहे हो तो आप गिफ्ट नहीं लोगे उससे? सर मैं गिफ्ट के टॉप में फिर अगर वो आप ऐसा कह रहे हो कि वो रोज रोज कर रहा है तो मैं एक दिन एज अ गिफ्ट ले लूंगा, बट नॉट एवरी डे। ऑन ड्यूटी आप गिफ्ट ले लोगे उससे? ऑन ड्यूटी नहीं सर, ऑन ड्यूटी गिफ्ट नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है ऑफिसर जी, एक प्योर आस्क एनीथिंग। What do you mean by search and seizure? सर्च एंड सीजर रिगार्डिंग सर किसी प्रीवियसली इन्वॉल्व क्राइम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी एविडेंस या उसके रिगार्डिंग मिलते हैं, सो उसके लिए गो फॉर सीनियर्स के पास जाते हैं, बात करते हैं कि रिगार्डिंग डीओजे, वो डीओजे से आप सर्च एंड सीजर्स के लिए परमिशन लेते हैं कि इस चीज़ के एविडेंस मिले हैं, हम उस पर्सन को लीगल नोटिस भेजते हैं उसके रिगार्डिंग। एंड किसी भी प्रीवियसली क्राइम के रिगार्डिंग उस पर सर्च वारंट या सीज वारंट जो निकलता है, सो सीज वारंट नहीं, माय बस सीज का कुछ भी निकलता है तो उसके लिए होती है वो चीज़। वो किस पे भी हो सकती है सर, उसके कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइक व्हीकल पे हो सकती है, उसके घर पे हो सकती है। Okay. आपने लाइक आपने एमडीटीज बनाया राइट? क्या सर? आपने एमडीटीज बनाया राइट? यस यस सर। What are the what are 5 important things to put in an MDT? Any 5 important things? So like for a crime happened, so first of all is what was the crime, क्या crime हुआ है, ठीक है। Okay, so उसके regarding आपको proper detail डालनी पड़ती है। I'll have to say only 5 ना। So first of all, what's the crime? Second one, जो जितने भी रॉबर्स वगैरह पे वहाँ पे है उनका डिटेल्स कि रॉबर्स क्या है, उन्होंने मास्क वगैरह क्या पहना है, क्लोथ्स क्या है उनके। थर्ड वन इज लाइक देयर व्हीकल जिसमें वो एस्केप करने वाले हैं एंड ऑल, उसके प्लेट नंबर एंड रिगार्डिंग। फोर्थ वन इज कि उन्होंने किसी सिविलियन को हार्म वगैरह पहुंचाया है कि नहीं, सो उसके रिगार्डिंग आप डिटेल डालोगे कि उन्होंने कोई हॉस्टेज बनाया है कि नहीं बनाया, हॉस्टेज बनाया तो कहाँ से बनाया, उसके रिगार्डिंग की डिटेल्स होती है। एंड फिफ्थ वन होती है कि पुलिस का उस पर क्या एक्शंस रहे, कि पुलिस ने कैसे चेज किया उनको, क्या वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए, क्या क्या उन्होंने फिर एंड में चार्जेस लगे। सो दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स यू हैव टू पुट इन एमटीटीज। ठीक है, ऑलराइट। आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी सिचुएशन। क्या आप लाइक कुछ भी लाइक गाड़ियाँ या बाइक या एनीथिंग, हैव यू एवर बीन सर्टिफाइड विद लाइक अ बाइक लाइसेंस और स्पीड इन्फोर्समेंट लाइसेंस, ऐसा कुछ हुआ है? सर आई वाज सर्टिफाइड विद एयर1 लाइसेंस। ओके, एयर1 लाइसेंस, ऑलराइट। समझ लो एक बैंक रॉबरी हो रहा है, ठीक है। वो टाइम पे कोई हाई कमांड नहीं है, कोई एफटीओ भी नहीं है, एयर1 कमांडर भी नहीं है, एंड कोई लाइक कमांड भी नहीं है, बेसिकली नो वन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज आर देयर। आपका रैंक एक ऑफिसर है एंड द पूरा लाइक एवरीवन इन द डिपार्टमेंट नोज कि आप एयर1 लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हो, वो सबको पता है। एक बैंक रॉबरी हो रहा है एंड दे हैव अ वेरी फास्ट व्हीकल दैट कैन गो वेरी क्विकली ऑन द फ्रीवेज एंड ऑल, तो हमारी गाड़ी पकड़ नहीं पाएंगे ढंग से, एंड द ओनली वे टू कीप विजुअल्स एन एयर1। तो वो टाइम सिंस वी हैव नो एयर1 पायलट्स अराउंड, एक सीनियर ऑफिसर आपको बोलता है कि यार यू नो हाउ टू फ्लाई एनीवे, गिविंग द टेस्ट एंड एवरीथिंग, एक बार एक एयर1 लेके आई सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पकड़ना ही है। सो आप क्या करते हैं? सर मैं जो मेरे सीनियर अफसर हैं उन्होंने, उनसे मैं बात करूंगा, उनको मैं सजेस्ट करूंगा चीज़ कि मैं सर अभी भी सर्टिफाइड नहीं हूँ, ऑल्दो आई हैव पास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट बट आई एम स्टिल नॉट सर्टिफाइड फॉर दैट वन। सो आई विल सजेस्ट यू कि लेट मी बी इन द ग्राउंड व्हीकल
एयर वन आप मेरे से मत मंगवाएं, बट अगर वो कहते हैं कि इट्स माय कमांड, आई एम द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द सिचुएशन एंड इट्स माय कमांड टू यू टेक आउट एन एयर वन, सो या सर एट द एंड मैं उनकी फिर कमांड फॉलो करके एयर वन निकालूंगा। ओके, एंड अगर बाई चांस वही टाइम पे मैं ऑन ड्यूटी आया एज एन SASP ट्रूपर, अब मेरे पास एयर का लाइसेंस नहीं है, आई एम नॉट ऑथराइज फॉर एयर लाइसेंस, आई एम नॉट एफिलिएटेड टू द एयर डिपार्टमेंट, और मैंने आपको बोला कि निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या? आपने लाइक यू आर आल्सो एन हाई कमांड ऑफ द आई एम एन हाई कमांड, डिपार्टमेंट। यस। Yes, so I'll follow your command and we'll take out an air one for that situation only. ठीक है, आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी के लिए आप जा सकते हो, आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है, जल्दी आपको रिस्पांस मिल जाएगा। Okay, sir. Thank you. हैव अ गुड डे। Have a good day to both of you, sir. You both are doing great in taking interviews, sir. थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू सो मच। सर ये फेलिनी में ज्यादा फंसा, बाकी सब तो स्मूथ था, बस फेलिनी में इसने थोड़ा सा दिक्कत करी है। मेरे को लगता है कि चलो मैं अपना लिख दूंगा, आप अपना। स्टार्टिंग में थे नहीं क्या आप? मैं थोड़ा मिस आउट किया, बट मैंने अपना लिख लिया। हाँ, ठीक है फिर, ओके। हाँ, और दाची कितने कैंडिडेट्स है टोटली? I think 2 or 3. कम आए हैं या फिर जल्दी जल्दी हो रहा है सब? 3 इंटरव्यू साथ में हो रहा है। फिर भी मतलब 26 थे, आई थिंक 25। 3. You can send one. Triple 4 back 41. Send for. हेलो मैम। हेलो ऑफिसर। आपका नाम? सर दिस इज इजाबेला। Alright, my name is Officer Jake Williams from the SASP department. I'm a trooper. To my left is Rafe Dart from the BCSO department. He's a colonel. We'll be taking your interview today. Before this interview starts, क्या आप हमें से किसी को भी आपका resume as well as medical certification भेज सकते हो? श्योर। I am not able to find your mail. check under. Okay. Yep. Give me 2 minutes. Huh? Yeah, no worries. इग्नोर मैं किसी को नहीं कर रहा, मैं बस इंटरव्यू से ज़रा फोकस कर रहा हूँ और कुछ नहीं।
Master You have classroom to is the next. accept that Yeah, one request. Yeah, done. Just end it. You can join us. I didn't notice Sherlock coming in. Oh, you didn't? I actually didn't, legit, yeah. कोई बात नहीं। Start नहीं हुआ क्या? No, no, she's just sending me her resume as and medical certification. What's her name? Send it दास बाबू को बोल दो wait कर लो। Her name was Isabella. Oh, got it. That's sir, hold on, I'll call you. बैठा के रखो, मैं बताता हूँ सब पेज। Sent. Can you check? Yeah, 1 second. All right. Before we while I'm going through your resume and your medical certificate, can you tell me something about yourself that is not on your resume? Yeah, so my name is Isabella. So basically, I am from India, Lucknow, and about my experience, I've just started my career as a cadet, so promoted to the post probationary officer. So I don't Can you have tell that the much candidate experience to about whisper, the Jake? PD, but 10-4. Ma'am, can you whisper, please? so I don't have that much experience about the PD. So here I'm like I want to start my career as a fresher. Yeah, Where were you from? I'm from India, Lucknow. So why would you want to why not serve in the Indian police or somewhere there to serve the country? Why Los Santos? Yeah, so due to some personal reason, I had to leave the city. So that's why left the. Okay. I mean, there were many, I get there were personal reasons for you to leave India and all of that, but there are many places in the world. There's New York, there's California, there are a lot of counties, a lot of offices around. Why the San Andreas State Police? I get the chance to come in this city, so I won't think about any other city. I get the chance to come here, so I decided to start my career here. Have you worked anywhere before? Yeah, but not that much. Like only for one a month. Okay, and where was this? In other city, India. You worked in India for a month. Yeah. Okay, because your resume states that you worked at the Los Angeles PD for a month. So did you work in India or did you work at the LAPD? मैडम जब लाना हो मेरे को बोल देना. Pablo Whisper. Ma'am? Resume देखते गए होगी अब तक. Okay. No. Actually, I'm quite nervous. So. No, don't be. Do you want a bottle of water or something? I can help you with the bottle. Sorry. I mean, I'm so sorry. I get nervousness, but there's no need for aggression. I'm so sorry, officer. That's alright. It's alright. Pablo, your candidate is feeling uncomfortable. Your presence might, I told him we'll be wrapping up our interview, then we'll join in. Yeah, we are waiting for you guys. 10-9? Ma'am, do you like a bottle of water or Bring something? Pablo, continue with the Yeah, interview. Yeah, I'll just give you one second. Thank you. Thank you, officer. No worries. There's no need to be nervous. It's just an interview. So
Yep. Mm. Yeah, so I mean, I'll ask you once again. Like, did you work out of the LAPD or were you stationed out of India? Yeah, I worked at LAPD. Okay. आपने लॉस एंजलिस पीडी पे लाइक व्हाट वर योर ड्यूटीज है क्या किया उधर वो एक महीने में? अ, सो इससे पहले तो मुझे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, सो मैंने वहाँ पर लाइक पेट्रोलिंग 10 कोड्स अबाउट 10 कोड्स और थोड़ा बहुत स्टोर रॉबरी ये सब वहाँ पे सीखा कैसे हैंडल करते हैं। ये जो आपने 10 कोड्स बोला है, या आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, आपको बर्गर शॉप पता है राइट बाजू में? यस यस Okay, तो अगर मैंने उधर एक ऐसे ही एक ब्लू कलर की बॉलर स्टॉप किया, आई कैन Yes. इजीली टेल रेव की रेव हैव स्टॉप्ड अ ब्लू कलर बॉलर, जस्ट कम एंड हेल्प मी आउट. बट वी यूज दोस 10 कोड्स फॉर कम्युनिकेशन. व्हाई इज इट दैट? जब इतना आसानी से इसको बोल ही सकता हूँ और वो आ भी जाएगा, व्हाई डू आई लर्न ऑल दीज कोड्स एंड क्यों रटना मारना है वो सब? लाइक व्हाट इज द पर्पस? So like to make our conversation small, confidential, or easy to understand. Okay. लॉस एंजल्स आने से पहले डिड यू रिसर्च अबाउट द SASP? Not that much. Okay. Are you the SASP is the San Andreas State Police? Yes. Do you know that we have sub departments under the SASP? Yeah, I've heard about, but I am not that much like knowledgeable about this. It's okay. Can you like at least like tell me if you know any of the departments? आप बता सकते हो कौन से departments है? I guess I don't have any idea about that. Alright, ठीक है. I'll let you know about this. So currently the SASP is divided into 3 sub departments. Mm-hmm. One is the LSPD, that is the Los Santos Police SPD, Department. I guess BCS was the part of that. Correct. Do you know the full form of BCSO? No. Okay. There's BCSO, that is Blaines County Sheriff Office. Yes. And the last is SASPR, that is San Andreas State Park San Rangers. Andreas, yep. Park Rangers. अगर ये इंटरव्यू सही गया and eventually you get selected and आपको एक preference मिलता to select one of these 3 departments, आपका preference क्या होता? Yes. LSPD. And क्यों? Because like I have searched about the LSPD, so I have some knowledge about that, so maybe like this. आपने बोला कि Is the interview still going on? 10-4. Yeah, just started. आपने बोला कि you've done some research about the LSPD, but when I asked you sub departments आपको पता नहीं था, like I don't know, or like the part like LSPD is the part of that SASP, but like apart from this, I like search about the LSPD. I know the word like LSPD BCSO, but I don't know. I didn't know this is the under SSP. okay. Is Bejuka Pablo? नहीं, I will tell. Chief of your desired department is here, Pablo. Okay. And you've done like what? Like, can you tell me like 5? I mean, not 5 actually. Which is while you were on duty for that month, what is the biggest situation you've been in? Store robbery. And what was your role in that store robbery? I was I was just learning about that, so I was the what I say I was the leading the situation. I was learning now, so that was my first situation. No, but like, क्या आप negotiate कर रहे थे? Were you Yes, taking yes, care I of the was host- yes, I was negotiating. Okay, तो आप मुझे इसे समझा सकती हो about the process कि अगर कोई negotiating officer है, what does that officer do with the situation और वो क्या क्या करता है या करती है? Yes, so firstly जितने भी अंदर सस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमको देखना होता है कि कितने सस्पेक्ट्स अंदर हैं, फिर उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे और ऑफिसर्स को पहुंचाना होता है. उसके बाद हम जितने भी लाइक अंदर सस्पेक्ट्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी डिमांड्स पूछते हैं और जो हॉस्टेज होता है उससे बात करने की कोशिश करते हैं. फिर उन लाइक हॉस्टेज के बारे में पता करते हैं कि हॉस्टेज ठीक है कि नहीं और उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या फूड तो नहीं चाहिए, कोई मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहे, वो करते हैं. उसके बाद हम जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी उनकी डिमांड्स पूछते हैं. Okay. एंड लाइक ट्राई तो ये करते हैं कि वो हमसे डर के या कैसे भी बात करके सरेंडर कर दे, बट इट्स डिपेंड्स लाइक वो नहीं करते तो
प्रश्न कर देते हैं तो। Since आपने like demands के बारे में बात किया है, obviously the Yes. robbers वो लोग कुछ भी मांग सकते हैं, right? For those Right. two guys. Right, तो sir. क्या आपको पता है the difference between negotiable items and non-negotiable items? Yes, sir. What is the difference? So non-negotiable items, like if they demand for the money and for the like PD vehicle or the PD things like a gun or like anything, so we cannot provide them. If the negotiable demands are like I'm quite confused, but I know the things like what they It's are. fine. Take your time. Like, don't get nervous about the interview. Take your time. You can think about the answer and like. Okay, I'll give you a situation. Okay. Yep. Like, समझो एक बैंक रॉबरी हो रही है. वो robbers. Sir, no spike and free pass. That's fine. That's fine. समझ लो एक बैंक रॉबरी हो रही है. Yes. जो रॉबर्स है उन्होंने सिटी के मेयर को हॉस्टेज बनाया है. Right. एंड वो बैंक लूटने के बाद देव रियलाइज दैट बैंक वाज नॉट हेवीली फंडेड. दे डिडंट गेन अ लॉट आउट ऑफ इट. तो फॉर द टू सिक्योर द मेयर्स लाइफ दे आस्क फॉर $50,000 फ्रॉम द पीडी और दे विल किल द मेयर ऑन द स्पॉट. यू आर द नेगोशिएटिंग ऑफिसर एंड यू आर ऑल्सो द कमांड ऑफ द सिचुएशन. आप क्या करती? सर अगर मेयर को हॉस्टेज किया है और वो मनी की डिमांड कर रहे हैं, सो इफ़ वी फॉलो द रूल सो मनी इज़ नॉट नेगोशिएबल आइटम. बट अगर मेयर को बना लिया है और मनी की डिमांड कर रहे हैं तो मेयर की जान के लिए तो आई गेस कर सकते हैं. क्या आपके लिए मेयर की जान एंड अनदर सिविलियन की जान अलग है? सर आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन लाइक यू. I mean, are you saying that the life of the mayor and the life of every other civilian is different in the city? No, sir, same. So, but you're willing to give the robbers 50,000 for the mayor, but for the civilian, you'll tell him it's non-negotiable. सर इट्स नॉट अबाउट दैट के लाइक दोनों की जान में कुछ फ़र्क है, बट मेयर की जान ज़्यादा प्रेशियस इसलिए है बिकॉज मेयर को पूरी सिटी संभालनी है और भी लाइक मेयर के ऊपर ही पूरा सिटी चल रहा है ऑफ कोर्स, तो इसलिए ऐसा बोला. बट अदरवाइज तो मनी इज़ नॉट नेगोशिएबल आइटम. ठीक है, right. Do you guys have any questions for now? I'll come back to it. Officers? Yes, I do. Go for it. बिल्कुल. So basically, ma'am, do you know what priority calls are? Yes. Can you tell me? You are asking about the 10 codes? Priority calls. Priority Okay, calls. it's I guess you are asking about 1078 or 1099. Alright, let me put it to you this way. I'm going to give you a situation. On one hand, there's me, who's down, the chief of police. On the other hand, there is the BCSO sheriff, Jordan Sendet. He's down as well. No EMS, no other officers apart from you. Who will you save first and why? One side is officer and other side is? On the one side is me, chief of police, Pablo Escobar, and on the other side is BCSO sheriff, Jordan Sendet. No EMS available, no other officers, you are the only one. Whom will you save first and why? So if okay, sir, according to Tell me, me according to chain of command. okay, so like chain of command. So firstly, like I will save the Sendet sir, then you, if I think Mention the reason as well. you see the said page chain aa of rahi है, command, so like firstly I think chief को बाद में, but otherwise like I'm confused. Alright, so reasonable suspicion and probable cause. Do you know it? Yeah.
Wormit burgers hats और Reasonable कुछ है? suspicion is when we don't have the strong evidence about the suspect, and so we cannot prove it in the court. And suspicious causes when we have the strong evidence about the suspect, so we can prove in the court. So that is. So किसी को फंसा Alright, रहे हो, so इस I'm gonna सबको give you a फंसा रहे हैं. situation where you got a breaking Yep. and entering call from the south side, the Grove Street, basically. Okay? When you approach the scene, you see a guy in full black outfit with a black helmet staring at that door from which you got the breaking and entering call. So will that be a case of reasonable suspicion or probable cause? And what would be your approach and why? Can you repeat the question, please? You got a breaking and entering call from Grove Street. As soon as Mm-hmm. you approach the scene, you see a guy in full black outfit and a black helmet just staring at that door. Mm-hmm. So, what would be your approach based on reasonable suspicion or probable cause, and why? Reasonable suspicion, because like I haven't seen them to do anything wrong there. He was just standing there. Alright. So, can you Yes. tell me any three most important things that you need to take care of while doing an interrogation or performing an interrogation? I never did it before, but still, like, I wanna answer this. I have to be little soft for him, like do not pressurize him. I think so. I never did it before. Alright. So, do you know what Miranda rights are? Right. Yes, I know. Why were they established and why are they necessary? So just to inform, just to inform the suspect that every one has their own rights, so that is why, I guess. Alright, any five important duties or any five duties that you performed as a officer in your previous experience? 5 duties. Yeah. Can you repeat the question, please? Any five duties or any five important duties of a law enforcement officer that he needs to perform? Yeah. So first thing, I have to yeah. For just give me 1 minute, please. Pablo, what is it? So Nothing, for nothing. Go ahead. सो पहले फर्स्ट थिंग मेरे को थोड़ा सा थोड़ा सा अपने आप को इन अ पॉजिटिव वे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोग अपनी ड्यूटी के लिए और अट्रैक्ट करना पड़ेगा? समझा नहीं। थोड़ा सा रहना पड़ेगा बीइंग अ ऑफिसर लोगों के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेव रखना पड़ेगा अपने ड्यूटी करते टाइम एंड सेकंड अपने जो भी सिटी में क्राइम्स हो रहे हैं उनको देखना पड़ेगा और punctuality also can be the part of the duty. So और Okay, so let's move on to the next Pablo, question. one What are sec. the What was the interrogation question you had asked? three important things that you need to take care of while in interrogation or performing interrogation? Ma'am, as per your CV, you've been in criminal investigations. Have there Yeah. never been a case where you've interrogated a criminal during that investigation? Yes, sir. So, you said you were not aware about important things during your interrogation. So, if you have done criminal investigations, that is a part of, like, an interrogation comes as a part of that as well. So, can you just tell us during a criminal investigation what was your general role out there? Like, what would you do? सर प्रॉपर इंटरोगेशन तो मैंने कभी नहीं किया है बट हाँ हमारे सीनियर ने एक केस दिया था तो उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर ज़रूर किया था। ठीक है, ऑलराइट। पाब्लो कैन कंटिन्यू। जस्ट लाइक अगर आपको नर्वस फील हो रहा है मी एंड पाब्लो कैन मूव आउट चाहो तो। Audible, right? Yeah, you are. I mean, do you all think, relax, Pablo, do you all think I'll make people nervous?
Pablo, I don't know. Y'all feel intimidating. I mean, to people, y'all should be I mean, nice, she yeah. wants to go in LSPD. He's the LSPD chief, तो थोड़ा Fair nervous हो enough. रहा होता है, Fair, इसलिए हाँ. fair enough. Yeah, that makes sense actually. Yeah. तुम क्यों lyrics? Right, ma'am. So you good, like, for continuing the interview? Yes, sir. Right. So under the SSP, what are the different departments that we have? And please tell me their jurisdiction as well. So I already asked, I guess, this question like under the SSP. Did you ask the jurisdiction as well? No, I did not. No, no. Yeah, then please tell me the jurisdiction of all the sub departments. That I don't know, sir. Alright, so what is force of escalation? Force of escalation is like if the suspect is using a gun or a PD is not is a PD is using AR, so that cannot be that cannot be done. So we have to use the same weapon as the suspect is using. Okay, so at Legion Square, you're standing, maintaining the peace of the city. There is one person who is coming closer to you to stab you. How will you match force with a knife? If he's using a knife, how will you match force? If he is using a knife, so we can use the hand stick, like what the PD has. Hand stick? I don't know the exact Oh, you mean name, but nightstick? yeah, nightstick. Alright, what is bail, do you know? Sorry, What is a bail? bail. Yeah. Yeah. Elaborate, please. I cannot. I don't know that. Alright, do you know amendments? Yes. Tell me any three, in brief. Yeah. So no, we cannot discriminate to the people by their color, by their religion, or by their caste. Second one is if we don't have the proper evidence, so we cannot enter into the private property to the anyone. And third is if we don't have any strong proof, so we cannot interrogate to the suspect. You are Okay, asking, please. so one last question from my side. Yes. As you mentioned in your previous answer that you can't enter anyone's private property, suppose Yes. there is a suspect that you're chasing and his vehicle came to a stop. Basically, his vehicle flipped. Now he gets on foot and starts running and he goes into a private property. Will you go behind him or will you just wait for him? So according to the rule, we need a proper warrant to enter into the private property. And if there is some suspect, so we can go to the permission of the um, house So what holder. if the suspect escapes till you get the permission or the warrant, whatever that is? So if we'll take the permission to search the house from the householder, so that also we can do. Alright, I got my answer. That's all from my side. You guys can go ahead and ask the questions. Okay. What was your previous rank? So I started as a cadet, so I'm fresher. Let's just assume that you are instated as Yeah, a probationary officer, just for the probationary officer. Let's assume you are instated as a probationary officer into the PVD. Yes, Okay? yes, sir. You see your captain using a police interceptor off duty for roaming around with girls. Whom will you contact regarding this? So can you repeat the question? Go on duty as a probationary officer. You see your captain, who's the senior, according to you, he's like very senior. Okay? He uses a police interceptor, like a Corvette C7 matte black, and roams around with girls off duty. Yes, sir. तो किसको कंप्लेन करो? So tricky question, but senior officer का complain करेंगे.
But it depends, like girls are comfortable, so it's not an issue. Okay. Yeah. Rape, Sherlock, Rex. Yeah, I have one question. I have one situational question, okay? So here's the situation. Chief of your department, Officer Pablo, commands you to do a thing, but it's against the regulations. Would you follow or not? So can you repeat the question? जो आपके चीफ हैं पाब्लो, Yes, yes. वो आपको कोई ऐसा कमांड देते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, Yes, sir. तो आप उसको फॉलो करोगे या नहीं करोगे? नहीं सर. नहीं करोगे? सर रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, चाहे फिर वो कोई भी लाइक ऐसे कोई भी ऐसे कमांड देता है. अच्छा, आप नहीं जा सकते हो. ठीक है. Of course. That's it from my side. वैसे since you said you are aware about the Miranda rights, आप मुझे सुना सकते हो? Yes, sir. Okay, I'm waiting. Yeah. So, Yeah. You have a right to remain silent. Anything you say will or can be used against you in a court of law. You have right of an attorney. If can't afford it, one will be provided to you by the state if available. Okay. All right, ma'am. I think the question that we had for you have kind of come to an end as of now. This is the end to your interview. So thank you for your time. And if you have been selected, your response will be out in due time. Thank you, sir. Thank you, officers. All right. Thank you for your time. अरे दास दादा. चलो भाई एलएसपीडी चीफ चलते हैं दूसरे रूम ऐसा लग रहा है हम सबने क्वेश्चंस पूछा, फिर शर्लॉक भी अरे यार मैं भी मुंह खोल लेता हूँ, चुपचाप बैठा हाँ हूँ. भाई, ऐसे मुझे भी फिर मिरांडा राइट्स पूछ लिया इसने. मैं सारे सवाल पूछ लिए थे, कुछ तो पूछ ही लेते हैं. मैं भी कुछ पूछ लेता हूँ यार. पूछना है, ये फ्रेशर के लिए थी. आई मीन हाँ फ्रेशर के लिए थी. अब कुछ ज्यादा ये तो बेसिक है. पाब्लो भाई एल के एफटीओ ट्रेन की है पाब्लो. भाई तू अरे पाब्लो. अरे उनका भी एफटीओ का नाम पाब्लो था. अरे पाब्लो भाई एल के एफटीओ है. थोड़ी है इस दुनिया में यार, क्या बोल रहे हो? हाँ तो पाब्लो भाई जितने हैं एल के ही एफटीओ हैं सारे. चल छोड़ू. तुम क्यों अफेक्ट हो रहे हो? हाँ सारे पाब्लो बोला उसने. अच्छा मतलब पाब्लो जो है ना वो एल के एफटीओ है, मैंने ऐसा बोला. वही. अरे मतलब वही. हाँ फिर वही बोल के गाली दे रहा है. क्वेश्चन अच्छा था. जनरेट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मजा आया. दो भेजो या एक? दो सेंड टू. बताओ रेडियो लाल हो गया यार. 4 है ना, तो 2 में खत्म. 2 हो जाएगा. जी 16 सिगरेट फूकने पड़ रहे, रेडियो सड़ रहा है, क्या हो रहा. और रहो गांव में. ओहो. अरे भूल गया रिएक्ट करना. अच्छा अभी भाई मैं कुछ बोल रहा था, साला बीच में ऐसे कर देता है. ओ यार और बताओ जनरेट भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई. और कितने ऐसे हैं बोलते यार? हैं और शरीफ कैसे हो, तुम बोलोगे और चीफ कैसे हो. यार तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा कि तुम्हें क्या बोलेंगे? गेम डेवलपर कैसे, आई मीन सॉरी गेम वार्डन कैसे हो? पाब्लो यार यहाँ पे कोई सीनियर ऑफिसर्स भी है यार, बी प्रोफेशनल. हाँ अरे सीनियर ऑफिसर दिख नहीं रहा. ओके भाई पाब्लो हम लोग राइट वाले को लेके चलते हैं. हाँ चलो. मैं तुम्हारे राइट सेंटर में ठीक है. वो ईस्ट साइड वाले रूम में ले चलो. ठीक. नमस्ते जी सर. आ जाओ चलो साथ में चलो सर. चलो. मैं खाना लेके आया. You want I can give you? नहीं है मेरे पास है. नमस्कार सर. नमस्कार. आपका नाम? हमारा नाम है शमशेर सिंह. Shamsher Singh. All right. My name is Jake Williams from the SASP department. I'm a trooper. To my left is Rafe Dart from the BCSO department, who's a colonel, and we'll be taking your interview for today. आप
बाय द टाइम एक आप अपना रेज्यूमे एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन हम में से किसी को भी भेज सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल भेजते सर। डन सर। 1 second। ऑलराइट, जब तक मैं आपका रेज्यूमे देखता हूँ, क्या आप मुझे आपके बारे में कुछ बता सकते हो जो आपके रेज्यूमे में नहीं है? बिल्कुल। जैसे आपको बताया, हमारा नाम है शमशेर। हम रहते हैं मुंबई में। हमारा जन्म हुआ था हैदराबाद में। वहाँ से फिर हमने कॉलेज वॉलेज किया अपना मुंबई में, एमबीए किया है हमने। जो हमारे दादाजी थे वो, उनका नाम है बहादुर सिंह, वो आर्मी में थे इंडिया में। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के हमने भी सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा देश के लिए काम करते हैं। तो हमने मुंबई पुलिस ज्वाइन की थी उस समय, बट सम रीजंस की वजह से हमको मुंबई छोड़ के आना पड़ा। और अब हम चाहते हैं कि अपनी ड्यूटी हम यहाँ पर करें ईमानदारी से। ओके, कितना टाइम का एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, वैसे हमको ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट मुंबई में हमने काफ़ी टाइम बिताया है, तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया है मुंबई का। यहाँ का तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हमको। ओके, एंड लॉस सैंटोस क्यों, कहीं और क्यों नहीं? हम एक बार छुट्टियों में आए थे अपने दोस्तों के साथ लॉस सैंटोस, तो काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ का माहौल। और हम ऐसे ही माहौल में रहना चाह रहे थे, बचपन से उम्मीद थी हमको, तो इसीलिए हमने शहर को चुना। ओके, यहाँ आने से पहले आपने SASP के बारे में कुछ रिसर्च किया? SSP के बारे में बिल्कुल बिल्कुल हमने SASP क्या है? रिसर्च किया अच्छा खासा। सैन एंड्रेस स्टेट पुलिस। एंड SASP के अंडर कुछ सब डिपार्टमेंट्स आते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या आप जानते हो? बिल्कुल। कौन से? LSPD, लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट, और अपना BCSO, ब्लेन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट, और वो पार्क रेंजर। ब्लेन्स काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट। यस। आपने अच्छा खासा रिसर्च किया, राइट? हाँ ठीक ठाक, मतलब जितना बेसिक था उतना, बाकी तो सीख लेंगे यहाँ पे। तो BCSO में डिपार्टमेंट कैसे आएगा? अब BCSO में तो मतलब डिपार्टमेंट तो हमने लगा दी अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट तो हो गई। मतलब जब कोई क्रिमिनल आएगा, तुमने बोला कि तुमने ये किया नहीं है, पर चार्ज हम लगा देंगे अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। I'll give you one more chance. What is the full form of BCSO? BCSO, प्लेन काउंटी शेरिफ ऑफिसर। ऑपरेशन। ठीक है, ऑप्टिकल भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है, बट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ठीक ठीक। मतलब आपको पता था ना, आपने रिसर्च किया था? अरे मतलब वो थोड़ा थोड़ा रह जाता है, समझ रहे हो सर। तो क्या होती है BCSO की फुल फॉर्म? ब्लेन काउंटी शेरिफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, देखो, अगर कोई रिसर्च करता है अबाउट SASP में सब डिपार्टमेंट्स, ये सबसे बेसिक रिसर्च है। द फुल फॉर्म ऑफ BCSO इज ब्लेन्स काउंटी शेरिफ ऑफिस। Oh my god. And the third department is SASPR, that is San Andreas State Park Rangers. Park Ranger, yes. अगर आप सिलेक्ट हो गए एंड आपको एक मौका मिले टू चूज वन ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, आपका प्रेफरेंस क्या होता? प्रेफरेंस तो देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जो LSPD है वो ज़्यादातर जो अपनी ड्यूटी देती है वो सिटी के अंदर देती है,
और जो BCSO है जो आपने बताया वो मुझे लगता है कि सिटी के थोड़ा बाहर ज़्यादा ऑपरेट करती है, और जो अपनी पार्क रेंजर है वो मे बी वो जंगलों वाली एरिया में थोड़ा ज़्यादा वो करती है। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस तो हमने सिटी के अंदर ही वैसे ज़्यादा काम किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे LSPD में जाना चाहिए। और अगर आपको LSPD नहीं मिला तो? नहीं मिला तो कोई भी डिपार्टमेंट चल जाएगा सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अच्छा काम कर पाऊँगा LSPD में, ऐसा मेरे को लगता है। तो आपको लगता है कि BCSO और SASPR में आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर जिस चीज़ में आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो तो आप वहाँ और अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए, वरना वो भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। क्या आपको SOP के बारे में पता है? यस, SOP के बारे में पता है। SOP का फुल फॉर्म? ठीक है, आप ही बता दो आपको SOP। स्टैंडर्ड बताओ बताओ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप मुझे बताओ व्हाट इज रीजनेबल सस्पिशन एंड प्रोबेबल कॉज? रीजनेबल सस्पिशियस बोले तो आपको किसी पे शक हो, वो होता है कि रीजनेबल कि हाँ इस पे डाउट आ रहा है, ये थोड़ा घपला वपला करके आया है, तो उसको बोलते हैं कि रीजनेबल। और प्रोबेबल कॉज बोले तो यही है वो जिसने कुछ कांड किया है, इसको देखेला है, इसके पास के अपने को प्रूफ है इसके, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबल कॉज। ऑलराइट, मैच ऑफ फोर्स क्या है? मैच ऑफ फोर्स बोले तो मान लो हम किसी सिचुएशन में हैं जिनमें सामने वाले बंदों के पास हाई स्पीड गाड़ियाँ चला रहे वो लोग, लेकिन हम लोग नॉर्मल यूनिट में हैं, तो हम तो मैच कर ही नहीं सकते। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग भी थोड़ा हाई स्पीड गाड़ियाँ लाएं, या फिर वो क्लास 2 चला रहे हैं बट हम पे क्लास 1 ही है, तो मैच करने के लिए थोड़ा क्लास 2 हम भी यूज़ करें फोर्स को मैच करने के लिए। ओके, मुझे पता है ये डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग क्या है? डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग बोले तो कि हम अपने को डिफेंस करते हुए, हमारे इंडिया में सिखाते हैं कि खुद को भी डिफेंस करते हुए कैसे ड्राइव करते हुए क्रिमिनल को पकड़े। अच्छा, ये चीज़ में तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज बता, तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। सबसे पहले कि हमको हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान सामने रोड पे होना चाहिए, और हम सामने वाले की हर पोजीशन पे ध्यान रखें और उसकी हरकतों को हर बार नोटिस करें, ताकि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारी गाड़ी ठुक सकती है या फिर ऐसा कुछ। सर हर पोजीशन बोला आपने, मतलब कैसी पोजीशन? मान लो वो गाड़ी आड़ी टेढ़ी चला रहा है तो उससे थोड़ा सा ना डिस्टेंस रख ले पीछे, ताकि वो हमको कोई वो ना कर सके, तो पोजीशन का भी ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है। आपको लॉ के बारे में पता है? हाँ हाँ, लॉ के बारे में पढ़ा है हमने। अच्छा, क्या आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हैं? 9 अमेंडमेंट्स के बारे में शायद हमने पढ़ा है। 9 अमेंडमेंट्स, ओके। उनमें से कोई भी तीन बताओ मुझे। एक अमेंडमेंट ये होता है कि जो सिविलियंस है उनको भी गन रखने का वो होता है, ताकि मतलब वो सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन उसके लिए उनको प्रॉपर वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंटेशंस, और वो रख सकते हैं गन। और एक ये होता है कि हम किसी की भी प्रॉपर्टी में ऐसे ही नहीं घुस जाते, हमको अगर कोई रीज़न है तो हमको उसके लिए प्रॉपर वारंट चाहिए, तभी हम घुस सकते हैं। और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि जब उनको पकड़ते हैं हम तो उनको कुछ राइट्स सुनाते हैं, और उनको भी वो देते हैं लॉयर, ये उनका एक राइट होता है। ठीक है। डू यू नो व्हाट कोड ऑफ कंडक्ट इज? कोड ऑफ कंडक्ट हिंदी में बोले तो सर अपना वो इंग्लिश थोड़ा। अच्छा, इंग्लिश टर्म इन दी एसओपी। हाँ यस आप सर, वो तो हमने जैसे बताया वो हमने वो लिख दिया है, वो क्योंकि टाइप मैंने अभी तक आपको सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही पूछे थे इन टर्मिनोलॉजी। तो अगर आप अभी बोल रहे हो आपका इंग्लिश वीक है रैंडमली फॉर एन क्वेश्चन यू डोंट नो, डज दैट मेक सेंस?
नहीं मतलब जितना मेरे को समझा है उतना तो मैंने बताया है। फेलिनी स्टॉप क्या है? फेलिनी स्टॉप बोले तो हमको किसी पे शक है कि ये बंदा किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व था और शायद हम पे उसके कुछ प्रूफ भी है, तो उसको हम फेलिनी स्टॉप करवाते हैं। ओके, समझ लो एक ग्रीन कलर का मित्सुबिशी ईवो है। ठीक है। आपको डिस्पैच पे एक कॉल आता है कि एक गाड़ी चुराई हुई है। हम्म। आप 2 घंटे कोड 1 कर रहे हो, पेट्रोल कर रहे हो। बिल्कुल। उसके बाद आपको वही गाड़ी दिखती है, वही नंबर प्लेट, वही कलर। हाँ पर जो अंदर बैठा है आपको पता नहीं है कि वो चोर है कि ओनर है। हाँ। आप उस पर ट्रैफिक स्टॉप करोगे कि फेलिनी स्टॉप? देखो जैसे कि हमको वो गाड़ी का पता चला है कि वो गाड़ी किसी क्राइम में यूज़ हुई है, तो हमारा तो फर्स्ट होगा कि हम सबसे पहले उस पर फेलिनी स्टॉप करें, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है अंदर कौन है। ओके, एंड एक्सप्लेन करो कि ये फेलिनी स्टॉप कैसे करोगे। सबसे पहले तो फेलिनी स्टॉप हमने ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ इसके बारे में पढ़ा ही है। बट जितना पढ़ा है उसके हिसाब से सबसे पहले तो हम लोग उस बंदे को, जो भी वो गाड़ी चला रहा है, उसको बोलेंगे आप साइड में गाड़ी रोक सकते हैं। जैसे ही वो गाड़ी रोकता है हम डिस्पैच पे कॉल देंगे कि सर आपने जिस गाड़ी का डिस्क्रिप्शन दिया था वो गाड़ी इस एरिया में है, हमको कुछ यूनिट्स चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। हम 77 मंगाएंगे वहाँ पे। और जैसे ही वो बंदा मतलब अगर वो रुक के वो करता है और बाकी फोर्स आ जाती है, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे उन पे कि गाड़ी का इंजन बंद कर दो और ये गाड़ी इस चीज़ में यूज़ हुई थी। वो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी इस बारे में। ओके, समझ लो आप एक ट्रैफिक स्टॉप कर रहे हो लीजन स्क्वायर पे। ओके। सामने वाली गाड़ी में 3 लोग हैं। बिल्कुल। गाड़ी है एक रेड कलर कमेरो। ओके। और वो स्पीडिंग कर रही थी। बिल्कुल। आपका कॉल साइन है 401। ओके। ये रेडियो कमांड दो ये पूरे ट्रैफिक स्टॉप का। व्हाट वुड यू से ऑन द रेडियो? This is Officer Shamsher. Call sign is 401, performing 1011 on Camaro, red Camaro. There is इसके अंदर 3 लोग हैं सर। उसको इंग्लिश में थोड़ा क्या हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, वो हिंदी में बोलने में दिक्कत नहीं है। यू कैन से इट इन हिंदी। 3 लोग हैं इसमें बैठे। भी अगर एडिशनल चाहिए तो मैं बोलूँगा कि नीड 1 एडिशनल। ओके, ये एंटायर कॉल आउट में जो हमारे कोड्स है 10 को, जैसे आपने 1011 बोला, वो हम क्यों बोलते हैं? वो इसके लिए बोलते हैं ताकि हम एक कुछ इन्फॉर्मेशन को सीक्रेटली अपने जो भी डिस्पैच पे हैं उनको पहुंचा सके, और जिससे जो क्रिमिनल्स है या फिर कोई भी है उनको पता ना चल सके हम किस बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहे वो चीज़। तो जब आपने बोला और काम भी जल्दी हो। जब आपने काम जल्दी हो, एंड जब आपने बोला नीड एडिशनल्स, अगर नीड एडिशनल्स के बदले में मैं 77 या 78 बोलूँ, काम कम हो जाएगा एंड ऑल्सो सामने वाले को पता नहीं लगेगा कि एडिशनल्स आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल अपना स्टेटमेंट ही काउंटर कर रहे हो बाय, आपने ही बोला। नहीं वो तो अभी देखो इतना तो हमने वो उसको यूज़ नहीं किया है। जहाँ तक हमने पढ़ा है, अगर 1-2 बार हम इसको यूज़ कर ले या फिर आप ट्रेनिंग करा दे बढ़िया सी, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगी ये चीज़। ठीक है। और आई हैव नो मोर क्वेश्चंस, यू कैन गो अहेड इफ यू हैव। कौन से रैंक के लिए डाला है आपने? सर हमको कोई रैंक से इतना कुछ वो नहीं है, आप किसी भी रैंक में हमको दे दे। बट आई थिंक मुझे लगता है कि कैडेट भी चलेगा हमको, तो ऑफिसर भी चलेगा, बस हमको ड्यूटी करनी है। चीफ चलेगा आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, हमको लगता है कि ऑफिसर या कैडेट। आपने कुछ भी चलेगा बोला ना, तो मेरे को लगा चीफ भी चलेगा। हम वो आपके हिसाब से ना, आप देखेंगे हम में क्या क्वालिटीज़ है क्या क्वालिटीज़ नहीं है, उस हिसाब से। लास्ट रैंक क्या थी आपकी? लास्ट रैंक हम थे सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर मतलब कि कौन से रैंक, मतलब नंबर पे आती है रैंक? ये आती है थर्ड नंबर की रैंक आती है। ये पहले आता है कांस्टेबल, सब कांस्टेबल, फिर आता है अपना। तो मतलब इंडिया से आपने पूरा वो किया अपना
जो भी नॉलेज बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल गेन किया। तो यहाँ का बिल्कुल तो कोई बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा आपको, बिल्कुल नहीं जो बिल्कुल नहीं, जितना बस पढ़ा है जितना उतना ही है होगा, वो राइट? पढ़ा है और हाँ यस। ठीक है फिर, दैट्स इट। अभी के लिए आपका इंटरव्यू हो चुका है, आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, मैं लीव। ओके थैंक यू। जस्ट एक सेकंड रुकना, मैं आ गया। फोर डबल वन टू डस और भी बचा है? आई थिंक बचा है, 2 है और एक सेकंड होल्ड ऑन, शर्लक जस्ट कम इनसाइड द रूम। Yeah, आ जाओ. What is your name? हैं? This is Rex Davis and on my right is Pablo Escobar. Were you a part of the last interview here? Yeah. You walked out of the room saying I'm going to grab a bite and then you come here. But Rave, वो अपना सॉरी सेंडेड सर का कोड 0 हो गया था, इनके साथ कोई नहीं था, तो मैंने बोला इनके आप, साथ पाब्लो नहीं थे? हाँ नहीं, ये दो थे। दो सेट हो गया और Didn't you think it was important to inform me about that first? Yeah, I think I should have done that. Yeah, just keep that in mind. It is not that the candidate you would like to interview, you can always go and interview. You need to figure out where you are and keep people informed around you as to what you're doing. Definitely sir, वैसे all the candidates are same for me. वैसे भी ये बंदा जो था हरियाणवी था, उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी मुझे। No, that doesn't matter. वो समझ में आते हैं कि नहीं समझ में आते. You were out there. You should have. Your first thing would be to at least inform if you are going somewhere else or taking another interview. Okay sir. Okay. Yeah. 112 to Dashi. कितने candidates बचे हैं? इसके बाद आई थिंक और एक होगा, ये 2 के बाद 2 है उनका। ठीक है, 2 भेज दो. स्ट्रिक्ट तो है, बनना पड़ता है भाई, ट्रूपर हूँ भाई. I can't be, देखो, I can't be strict with Rex, I can't be strict with Pablo, I can't be strict with Rave, I can't be strict with Jim, I can't be strict with Sender, I can't be strict with ये क्या बोलते हैं लोग, केविन बटलर, बट बाकी सबसे I have to be strict. किसका ले रहे थे इंटरव्यू? शमशेर. नॉक कर गया सर, may I come in? Yeah, sure, come in. Yeah. आपका नाम? Yes, this is Arjun Acharya. Arjun Acharya. All right. My name is Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. Yeah, you can come in. To my left is Rafe Dart. He's a colonel in the BCSO department. To my right is Sherlock Rogers. He's a senior officer in the LSPD department. And we'll take your interview today. Yes. Before we start this interview, can you send me your resume and medical certification? Yeah, wait. सर बोल के आ गया उधर। क्या क्या? हाँ ठीक है। बोल के आया उधर। हराम खोर। हाँ? क्या नाम था इसका? क्या नाम था इसका? Sir, I have experience of commanding studies. I have experience of volunteering work with the police department of India. One direct to Pablo and Rex. Please, can you ask him to whisper? 10 for. 10 for done. Copy. So I'm awaiting your resume as well. Yeah, it's there, I guess. थोड़ा सा आगे आ जाइए।
हाँ जी, perfect. Yes, sir. Rave, just start this off. I'll forward you and Sherlock the details. Okay. So अपनी बारे में कुछ बताइए सर, कहाँ से आप हैं, क्या करते Yeah, थे, so all. basically I'm from India, but my parents moved like Can you moved out tell from that India candidate like to बड़ी whisper कर लो when I please. was a kid. Yeah, whisper. Whisper कर लीजिए please. Okay. हाँ जी, So carry like on. they moved to Anaheim. My study was at California, okay, UVI University. After that, wait a minute. Yeah. After that, I worked for what do you say? Anaheim Police Department, and after that, I worked at what do you say? A secret branch that I can't what do you say reveal because of secrecy or like the branch I was working for has like its own concerns, and they like walk in shadows, like I it don't was know, a tell me. secret branch of NIM Police Department. Okay, so what was your rank? I was sergeant before I moved to my sub department. Okay, you were sergeant. In India? No, NIM only. Okay, okay. So ATP. ठीक है, आपका इंटरव्यू भी उसी के बेस पे होगा, जो आपकी Yeah. रैंक है, Yes, डिफिकल्टी sir. लेवल उसी के हिसाब का होगा. Yes, sir. एसओपीज से तो फेमिलियर होंगे आप, ने Yes, अच्छी sir. रैंक थी आपकी. I was like field training operator. ओ यू आर एफटीओ. Yeah. नाइस. कितने लोगों को ट्रेन किया अब तक आपने? Like गिने नहीं है सर. कितने Like I बैचेस को usually या फिर कितने? yeah 3 batches mostly. Like एक बड़ा वाला बैच था 15 लोगों का, like 50 लोगों का भी था, 15 लोगों का भी था. एंड तो बेसिकली एफटीओ हैं आप, तो ट्रेनिंग में क्या बताना होता है आपको? एफटीओ एफटीओ कैसे काम करते हैं, उनका क्या यस, रोल होता है सो पीडी में? बेसिकली 6 साइन ऑफ्स होते हैं, ठीक है. वेयर आई यूज टू वर्क 6 साइन ऑफ्स होते हैं. सबसे पहले स्टार्ट होता है हाउ टू वर्क एंड लाइक प्रोफेशनलिज्म एंड हाउ टू टॉक ऑन रेडियो. रेडियो पे कैसे बात होना चाहिए, 10 कोड्स अच्छे से देना, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना, पैनिक ना हो जाना रेडियो पे, कॉल्स क्लियर देना, छोटे देना बट क्लियर देना, आफ्टर दैट प्रोसीजर्स पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका बेसिक नॉलेज देते हैं, ठीक है. कॉज लाइक 10 कॉल्स भी सारे तो इधर पुलिस डिपार्टमेंट में कौन से यूज होते हैं मुझे भी नहीं पता. जैसे जैसे मैं लाइक यूज करता जाऊंगा वैसे वैसे आते जाएंगे, तो उन पे लाइक नए कैडेट्स का व्हाट इज ग्रीप बनता जाए. आफ्टर दैट लाइक रिस्पॉन्ड करने के बाद कैसे नेक्स्ट प्रोसीजर्स होती है, जैसे कि अरेस्ट कैसे कर, लाइक अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद रिपोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, देन उसको प्रोसेसिंग कैसे करते हैं. ऑल दिस थिंग्स लाइक आई हैव टू टीच देम बिकॉज सबको एक्सपीरियंस नहीं होता ओके, पुलिस तो डिपार्टमेंट का. कैन यू टेल मी हाउ टू ब्रीच इन एंड व्हेन टू ब्रीच इन एंड व्हाई टू ब्रीच? ओके, सो ब्रीचिंग का एक प्रोसीजर होता है. इफ लाइक लेट्स जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ अ रॉबरी. जैसे कि कोई स्टोर में रॉबरी हो रहा है एंड दे हैव अ हॉस्टेज. सो इन दैट सिचुएशन we usually don't breach in, but if they hurt a hostage, like उन्होंने hostage down कर दिया है, ऐसा कोई situation हो गया है, so we go for a breach in cause like hostage is already bleeding out, and we have to breach in to save him. And the procedure is like really simple, smoke and flashbang, and all in. That's it. Yeah, left right se cover and all in. We usually do that, and we had a like really good success rate in that breaching tactic. Okay, then let's assume you are in a bank robbery and there are two robbers and they are demanding for something which you cannot provide them, right? Yes. Then uh, how you will approach the situation?
They are asking for something like I'll which is not first possible. You will yeah, go which for the is not breach in, and yeah, what okay, you will like be they are asking for a hostage swap or something like like that. hostage. They are asking for hostage to hostage, which is not Yeah, I possible. get it, I get it. So I'll tell them it's not possible. Okay, if they are threatening the hostage They and are stick on their situation demand. is getting वो स्टिक कर गए अपनी डिमांड पे, वो नहीं हट रहे उस डिमांड से। अभी आप क्या करोगे? या इन दैट सिचुएशन उनको पहले तो लाइक वर्बली समझाएंगे कि वी आर लाइक इन मोर नंबर्स देन यू, ठीक है। इफ दे डू समझा एनीथिंग चुके हो टू आप सब या कुछ, एंड कि वो मान नहीं रहे। अगर फिर भी नहीं मान रहे, सो लाइक वी ट्राई टू ब्रीच इन एंड हॉस्टेज के, हाउ? या हॉस्टेज के पाँव पे फ्लैश एंड आफ्टर दैट वी ब्रीच इन लाइक विथ अ स्मोक। हॉस्टेज के पाँव पे फ्लैश? मतलब आप फ्लैश फेंकोगे हॉस्टेज के पास, ये कह रहे हो आप? नहीं, हॉस्टेज के बिहाइंड, लाइक उससे लाइक हॉस्टेज हॉस्टेज के को, पीछे फेंकोगे? हॉस्टेज को कुछ नहीं होना चाहिए उससे, यू नो। मान लो, अच्छा चलो, एक बंदा आपके सामने है, आपको दिख रहा है, बट दूसरा बंदा अंदर कहीं, मतलब ऐसी जगह पे जो आपको नहीं दिख रही है, ऐसी जगह पे दूसरा बंदा हॉस्टेज को लेके खड़ा हुआ है, अभी आप क्या करोगे? डोंट गेट इट, सॉरी। सर आपने कहा ना आप एक्सपर्ट हो ब्रीच इन में, तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, लाइक पीडी में अब अगर आप बट होते हो मैं कहीं पे। क्वेश्चन नहीं समझा, वो आप बोले। ओके लिसन सर, अभी आप एक बैंक रॉबरी में हो, अगर मान लेते हैं लीजन बैंक है, राइट? लीजन बैंक यस, पता है आपको? या उधर या लीजन पे या एक बैंक है। यस उधर यस आपने एक डोर है, शीशे का डोर है वो, लाइक कांच का है वो, ठीक है? उसके यस जस्ट पार आपको एक बंदा दिखा। उसने उस टाइम पे जब आपने बोला कि हॉस्टेज को सामने लाओ, लाया, बात करवाई, उसके बाद वो पीछे ले गया। पीछे वो कहीं पर अंदर रख दिया जाके उसको, हॉस्टेज ने, लाइक हॉस्टेज को। एंड एक बंदा उसके साथ रहा, दूसरा बंदा आपसे बाकी फर्दर नेगोशिएशंस के लिए बात करने के लिए बाहर आया, लाइक डोर के पीछे, कांच वाले। यस। अभी आप इस सिचुएशन में कैसे ब्रीच इन करोगे? हॉस्टेज अंदर है। सर तो इसमें लाइक हॉस्टेज को भी फ्लैश करना पड़ेगा। लाइक फ्लैश कैसे करोगे आप? अंदर फ्लैश फेंकोगे बाहर से, उस बंदे को पहले डाउन करोगे, कि मतलब क्या अप्रोच कैसे होगी आपकी फर्स्ट अप्रोच? अगर आप एक्सपर्ट हो तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, यही मैं कह रहा था अभी। यस यस, तो ऐसी आई नो। सिचुएशंस में आपका कैसे अप्रोच करोगे? I'll flash first then breach in, cause अगर वो फ्लैश हो जाएगा, यू नो, रॉबर, एंड सो लाइक ठीक है सर, लेट्स फ्लैश मूव ऑन होते टू ही। अनदर क्वेश्चन। ठीक है, यस। ठीक है, अभी एसओपीज में आ जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? क्या? कोड ऑफ कंडक्ट, ये फेमिलियर हो इस वर्ड से आप? नहीं सर। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस? स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस, लाइक any alternative pronunciation? लाइक स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस फॉर डीएनए। Okay, a statute of limitations for DNA is like 30 days. ओके, बस बेसिकली होता क्या है ये नहीं पता आपको? लाइक 30 Like ये 30 दिन टर्म के हम अंदर क्यों? ब्लड, 30 दिन के लिए अगर हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है, सो वो ब्लड सैंपल 30 दिन के लिए वैलिड है, cause आफ्टर दैट लाइक सेल्स ड्राइड अप हो जाता है, एंड दैट लाइक बॉडीज एविडेंस इज नॉट वैलिड इन कोर्ट। Officer Jake, are you there? Yep, I'm listening. If you wanna ask in this anything, I like mean, situational. yeah, I'm not going to go down statute limitation and stuff like that. I'm going to ask you because I just want to understand certain things from your point of view as well. You were a sergeant, right? Yes sir. आपका next rank in your department कौन सा था? Yes sir. आपके higher one, who was your senior? What was his rank? Your immediate senior. Okay, head sergeant, and after that lieutenant. And your immediate junior, वो कौन सा rank था? Senior officer. Okay, so it was senior officer, sergeant, and head sergeant out there. All right, okay, that actually clears a lot for my understanding because a lot of departments are structured differently. There is one corporal rank, but where I used to work, there was no corporal. No, that is all right. Okay. When do you arrest a person? When do you detain a person? On a reasonable suspicion, I detain a person, and on a probable cause, I arrest them. Okay. On when you detain a person, do you search him?
when I detain a person, I don't go for a search until and unless I have to convert it in a probable cause, and he gives us a concern. Okay, if you don't search him, do you like what do you do? Do you do anything at all with reasonable Yeah, suspicion? on a reasonable suspicion, a dog sniff is like a valid on what do you say his concern, Okay, and try to take evidence Sorry, against him and can you talk it repeat out. that? Yeah, dog sniff on his concern and उसको like बात करने like बात करते करते सब जानने का try करेंगे. Okay, and if he does not give you any permission for a dog sniff, then Permission नहीं है, so like I'll talk it out कि यहाँ क्या करते थे. Like let's consider what do you say weed selling, and if he is doing something suspicious, I saw it from a distance, but I am not sure. I'll go to him and say, what were you doing here? Like क्या बेच रहे थे? If he says कि मैं कुछ बेच रहा था, तो क्या बेच रहे थे? And you know, conversation progress. say a person has done a house robbery, and you only have reasonable suspicion on that person. How will a dog sniff help? No, not in house robbery. So yeah, I just asked you generally that if you have reasonable suspicion, what will you do? You said a dog sniff. That implies to every reasonable suspicion situation, you would ensure that a canine unit is inbound, which is not ideally the case. Yeah, that was kind of my bad. Sorry, sir. Okay, I'm gonna give you a situation. Yes, sir. Take a example that you're an officer in the LSPD department. Yes, sir. In one part of Los Santos, there's a hostage situation happening. The command of that situation is the SASP chief. He informs you that he needs your help, and you need to respond to the situation. Yes, sir. On the other side, there is the LSPD chief, who is your direct chief. He's in an active shootout situation, and he tells you that there are some suspects that are trying to take me down. I need instant backup. And in the last area, there's one officer who is currently very heavily injured. He's at the PD, but he notices with the help of a dispatcher that within a close proximity to you, there's a downed officer. So he gives you a call. He's also at an officer rank, the guy who's giving you a call. He tells you that at a very short radius near you, there's a downed officer. Can you help him down first, or he might lose his life? Where will you respond first, and why? And what will you do? How will you take care of these three situations that happen together? Okay, so for the downed officers, I like first call the EMS. Okay, and there are like other units. So if like my chief is in a shootout situation and it's like really serious, so I'll try to save him first. And there are like more units at the PD, so like they can go for the what do you say hostage situation, and they try to hold them until we done with our situation at what do you say officer. So Try to save the officer. And So are you neutralize the suspect. saying that you can't go towards the SASP chief and send the officers of the PD towards the LSPD chief? Like आपने ही बोला that you'll go save your direct chief and you'll let other officers respond to the hostage situation. Why can't it be vice versa? Yeah, it can be vice versa. No, but then your first motive was you will go save the chief. I just want to understand why. Was like my chain of command goes to directly under my chief. The chain of command, technically, the SASP chief is the highest in command among every department. Are you aware about that? Yes, sir. So, if you are aware about that, then whose command would hold higher value? Would it be the SASP chief or the LSPD chief? So in the hostage situation, they are like holding a hostage, and what do you say officers backup can like try to hold up the situation. But in the shootout situation, like the person is directly like under the what do you say risk of getting hurt. So Okay, so you're saying that your response time would be faster than any other officer's response time.
mean, it could be true, but I mean, I don't think it's true because you're not confident about it. If you just directly answered yes, I would have been like, Yes, okay. actually, yeah. In like what I said, I'm confident in that. But No, if you were, you'd have said yes directly, because the thing yeah, is yeah, that yes, since you were yes. hesitant to say that, it's clear that you did not have confidence in yourself that you would respond faster than the officer. Yeah, nah. I'll respond faster than my officers cause like there are like 2 lives in danger. Wait. Like one life was my chief and one life was that hostage. Okay, so in this situation, there are two things that come into play. One is chain of command, which I think you already know, and Yes, the sir. other is priority calls. Yes, What sir. are priority calls? So basically, like priority calls, matlab like EMS down, officers down, then what do you say? अगर like grand theft like car robbery के like tampering and car robbery के against कोई situation चल रही है and we get a call for the what do you say bank robbery and ठीक है. I'll things. give you So one we'll respond to situation. that. Yes, sir. A car is speeding. You all go to pull him over. Yes, sir. He completely like he is of no threat. He pulls over as you command him to. You tell him to stop the vehicle on the right. He stops it on the right. Okay. It's a black color bolo. Yes, It's sir. occupied thrice. Yes, sir. And it's you plus one in your vehicle. Mm-hmm. You're only pulling him over for speeding, nothing else. Yes, sir. When you pull him over, he informs you that, officer, I am armed. Yes, sir. How do you approach this traffic stop? What do you do next? So if he's like armed, then I'll call for just one more unit for like safety reasons. Mhm. Cause like he's armed, you never know like when situations get dangerous and like Mhm. it can mess up. So like I'll call for one more unit just in case. Okay. And Would it? I'll approach his vehicle and No, that's I'll fine. Would it stand in a be a middle pillar. 77 or 78? It is 77. Okay, so if the person's armed, it is not an emergency that you get a slight help behind you, right? I mean, he could just get off and probably shoot you if he's armed, but it won't be an emergency. I mean, just a weapon, right? Small thing. Like he's like coming in front and saying that he has a weapon and I'll first give like tell him to like hands in the air and stuff, you know, so I can see his hands and I will get to the middle pillar until my backup arrives. Okay, ठीक है. Alright, I mean, those are my questions. Sholab, do you have anything to ask? I have an important question Go to for ask. it, go for it. Yeah. So your rank is sergeant, right? I mean, your rank was sergeant, right? Yes, sir. How many years of hard work did it take for you to become a sergeant? Like I was sergeant for like 6 months only. In 6 months, you achieved the rank of sergeant. Am I right? Nah, I was yeah. I mean, you dedicated 6 months to become sergeant, right? No, I was sergeant for like 6 months. You were sergeant for 6 months. So I'm asking, how many years did it take for you to become a sergeant? 3. 3 years. Okay. So I'm gonna ask a few questions. I can see on your resume, your education was completed in December 2021. Okay. You were working in NM Police Department in June or July 2021. That was a really confusing thing for me, which ended in January 2022. So your shift time was only 6 months. So I do not see any prior 3 years of Nah, experience. after that I was in a APD department, but it was like So did your it was education and my your employee work history? my employee were like it's a confidential, you know. That's fine. But did your education and your work history clash for some reason? Yeah, it was like my last year in the college. It was kind of like what do you say, internship type of thing. Actually, in that part of my life, I only did a what do you say public work. It was not on field work. It was like police public work, you know.
Okay. Other than that, the 3 years of experience is not shown up in the resume, which does not gives us a clear idea about your achievements or what duties you performed or how Yeah, your. actually, that 3 years of my life was like blank for, like in my resume. ठीक है. It always will. Ray, so you got something? Nothing, sir. Nothing. It's over. It's okay. You can go. Right. Your reply will be. Thank you for interview. Yeah. We'll let you know in due time about your response. सर जेक को एक चीज नहीं समझ में आती, ये लोग अगर थोड़ी कम रैंक डाल देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा इनका रिज्यूमे पे. और इतनी रैंक है तो इतना नॉलेज भी होना चाहिए. चीफ ही डाल दो, इससे अच्छा अगर सार्जेंट ही डाल लिया तो चीफ डालो डायरेक्ट. Putting sergeant is not the issue. If you put sergeant, you know everything in and out. बस. Yeah. वही तो. I think till senior officer you should know everything. उसके बाद तुम्हें रैंक्स मिलते जाएंगे. It's about your. मेरे से ज्यादा आना चाहिए उसको. हैं? मेरे से ज्यादा आना चाहिए तब मैं मानूंगा सार्जेंट है. अरे? ये भी ठीक है. ऐसे थोड़ी होता है कि बस बूट आके चलो सो के उठता हूँ मैं, रेज्यूमे बना देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, चलो सार्जेंट, चलो हाँ ठीक है सार्जेंट डाल दी, चलो चलते हैं इंटरव्यू देने. ठीक है लास्ट था. उसको कौन सा डिपार्टमेंट पूछा नहीं? अरे पता ही नहीं, छोड़ो. दास जी, are there any more candidates? One more. Send for, you can send it. मैं देख क्या उधर कुछ हो रहा है. बार-बार लाइट चली आती है. I wanna chill. मैं आरआर झेल रहा था क्या उतने हुआ देर उधर, से. क्या हुआ? नहीं वहाँ कुछ नहीं हुआ. मैं समझ हो गया रहा था. क्या हो गया पाब्लो? डिसअपॉइंटेड लग रहे हो बहुत ज्यादा. मैं क्यों डिसअपॉइंटेड हूँ? लोगों से. मैं तुम में डिसअपॉइंटेड हूँ. मैं बिन बताए ट्रूपर को आ गए उस रूम में. शर्म आ रही है? क्या? अपने चीफ की नाक कटा रहे हो. मैंने क्या किया? चीफ ने तुम्हें बोला, बिन इन्फॉर्म किए आ गए सीधा उस रूम में इंटरव्यू लेने. हाँ अरे सर ऐसे चीफ की नाक कटाओगे? मुझे रेप डाट के लिए बुरा लगा. अरे सेंडेट के लिए बुरा लगा था. वो कोड जीरो हो गया बेचारे का. मैंने बोला कोई नहीं, वॉलंटरी में हेल्प कर देता हूँ. थोड़ा ध्यान रखो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा. हाँ, अभी हाँ. सीनियर ऑफिसर बने हो, झटके से कैडेट बन जाओ, मजा थोड़ी आएगा. चलो आखिरी बंदा है आज का. चलो यार आप लोग ले लो, मैं निकलता हूँ अभी. ठीक है. वहाँ पे रिस्पॉन्स अपडेट करता हूँ. कौन है? तू रेक्स ये देख रहा था कब से? हाँ. Hello, officer. Myself, Danny Gilson. What's your name again? Danny Gilson. Danny Gilson, right? Yep, sir. Nice to meet you. My name is Officer Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my left is Pablo Escobar, who is the chief of the LSPD department. To my immediate right is Senior Officer Sherlock Rogers, and to his in the LSPD department. And to his right is Game Warden Rex Davis from the Packages department. Okay. Alright. Good evening, officers. Before we start this interview, can you send any one of us your resume as well as your medical certification? Yes, sure, sir. Just a minute. What was your name again, by the way? Sorry, are you saying something? Yeah, what was your name again, by the way? Danny Gilson. Danny Gilson, alright. Yep. You're the one who sent me medical certificate, right? Yes. Yeah, I got it. I sent Yeah. it. Alright, by the time I look at your resume and your medical certification, can you tell me something about yourself that is not in your resume? Sure, sir. So, my name is Danny Gilson. I am from Panjim, Goa. So,
Actually, sir, I just come here from Los Angeles. Okay. So, sir, can we go with the Hindi? श्योर आप If हिंदी you're में भी not बात कर सकते हो, okay, उसमें okay. कोई टेंशन नहीं है. Okay. So, sir, मैं गोवा पंजिम से था, sir. Born and birth. I'm single son of my parents. So my mom अभी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, and my father, I lost my father in when I was in college. So my father कमिश्नर थे गोवा पुलिस के. So एक एम्बुस में वो सूट आउट में शहीद हो गए थे. So actually what happened, so my father एक केस में काम कर रहे थे जो एक ड्रग पिगलर का केस था, जिसपे मेरे फादर ने 50 kg ड्रग्स सीज किया था उनका. सो उन्होंने मेरे फादर को रिश्वत देने की कोशिश की और जितने भी ड्रग्स थे उनको छुड़ाने की कोशिश की, बट माय फादर रिफ्यूज दैट ऑल द ऑफर्स. सो उन्होंने एक प्लान बनाया और मेरे फादर को एक दिन वो ड्यूटी पे रिपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने सडनली उन पे अटैक कर दिया और माय फादर शूट आउट में शहीद हो गए थे. सो फिर मैंने अपने कॉलेज वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड मास्टर करने के लिए मैं लॉस एंजल्स आ गया. सो मैंने अपनी मास्टर्स MBA कंप्लीट किए, फिर मैंने कुछ टाइम PD में सर्व किया, फिर उसके बाद मैंने मास्टर इन लॉ किया. सो जस्ट आई कंप्लीटेड माई मास्टर इन लॉ. ठीक है. आपका लास्ट रैंक क्या था? सो माई लास्ट रैंक इज़ फर्स्ट ऑफिसर, सर. ओके. एंड आपने ड्यूटी किधर दी थी? लॉस एंजलिस, सर. Los Angeles. State Police, yeah. Can I know कि like since the past like sorry sir, can you repeat? हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ since the past 2 years आप क्या कर रहे हो लाइफ में? सर लास्ट 2 years सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ सर मास्टर इन लॉ की, मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है, बस मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर उस पर, मतलब केस स्टडी एंड ऑल. आप वो 2 साल से कर रहे हो, राइट? ओके, या फेयर इनफ. ठीक है. आपके पास मौका था टू वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पर तभी भी आप ड्यूटी लॉस एंजल्स में करना चाहते हो, क्यों? सर लॉस एंजलिस में बिकॉज सर आई थिंक यहाँ पे PD डिपार्टमेंट अभी न्यू है सर, एंड ऑल ऑफिसर्स आर प्रीटी बोलूँ सर कि बहुत अच्छे हैं मिलाल, और मेरे हिसाब से सर अभी क्राइम रेट शहर में कम है. इन फ्यूचर ज़रूर होगी क्राइम रेट सर, तो ऑफिसर्स बहुत मतलब कि ऑफिस हमें चाहिए होंगे डिपार्टमेंट में, और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि इस डिपार्टमेंट को सर्व करना और अच्छे से स्टार्टिंग से सीखना, और साथ में डिपार्टमेंट को आगे ग्रो करना सर. ओके. आपने बोला यहाँ के ऑफिसर्स अच्छे हैं, राइट? यस सर. आपने कौन से ऑफिसर से इंटरेक्ट किया है? सर नहीं किया, बट आई होप द ऑफिसर्स आर गुड. यू होप मतलब आपने अभी बोला कि यहाँ के ऑफिसर्स अच्छे हैं, and I was saying you नहीं, hope means, they are nice. Yes sir, So that definitely means sir. आप Officers you're just assuming your research then. या डेफिनेटली सर, यदि ऑफिसर्स यदि सिलेक्ट जो भी आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे हैव सब एक्सपीरियंस एंड गुड क्वालिटी ऑफ नॉलेज, सो दैट मीन्स वो तो दुनिया में कहीं भी होगा. आई थिंक every office department, every PD would not want to select inappropriate candidates and would not want to select unprofessional candidates. So that would not differentiate us from any other functioning police department out there, right? Yes sir, but I think the systematic work अच्छा होगा sir. Okay. Yeah. Have you done any research about the SASP? Yes sir. What is the SASP? So it's a San Andreas State Police. और क्या आपको पता है उसके अंडर कुछ सब डिपार्टमेंट्स हैं? Yeah, there's a 3 sub department, and one is the LSPD, Los Santos Police Department, and this is a BCSO, इनके Bland County Sheriff Office, and the third one is SASPR, that means Los Angeles State Park Rangers. Are you sure about that? Yes sir, just as per my study that. What is SASPR? It's a San Andreas State Park Rangers. If I'm wrong, please correct me, sir. No, before this you said Los Angeles State Park Rangers. That's why. No, San Andreas, sir. Sorry, my bad. अगर ये इंटरव्यू अच्छा गया and you had an option to select a department of your choice, कौन सा होगा? Sir,
I'm not more about I'm not knowing more about SASPR. So मैं SASPR में अपन जाना चाहूँगा और उस डिपार्टमेंट में सर्व करके उस डिपार्टमेंट के बारे में सीखना चाहूँगा सर. ओके. मुझे पहले एक चीज़ बताओ, इन योर कपल ऑफ योर प्रीवियस आंसर्स आपने मेंशन किया कि अभी क्राइम रेट कम है, बाद में ज़्यादा हो जाएगा, सो वी नीड ऑफिसर्स. Yes sir. Isn't it our job to ensure that the crime rate does not increase? Are you in contact with any criminal people out there जिन्होंने आपको एक टिप ऑफ दिया है कि लॉस एंटोस में क्राइम बढ़ने वाला है, तो यार लॉस एंटोस जाके ड्यूटी दो? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्राइम रेट सर सडनली इज़ नॉट इंक्रीजिंग सर. ये ग्रेजुअली होता है सर शहर में. ठीक है सर, ये पता नहीं चलता, ये किसी भी शहर के किसी भी कोने में या आउट ऑफ द सिटी वो प्लान होते रहता है, बट सडनली वो एक एट अ टाइम सर वो बढ़ जाता है क्राइम रेट. सो सर यदि ऑफिसर्स हमारे पास नहीं रहेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंट सिनेरियो को देख के हम ऑफिसर्स, यदि हमारे पास कम ऑफिसर रहेंगे तो इन फ्यूचर हमें दिक्कत होगी. मतलब हमें लैक ऑफ ऑफिसर्स के कारण और क्राइम रेट यदि ज़्यादा हो रहा है, मल्टीपल सिनेरियोज हो रहे हैं, सो हमें रिस्पॉन्ड करने में बहुत दिक्कत होगा. सो इसलिए हम एडिशनल्स ऑफिसर्स ऑलवेज रखते हैं कि इन फ्यूचर यदि कुछ भी सिनेरियो हो, ऐसा होना नहीं चाहिए बेसिकली, ना हो तो ज़्यादा बेटर है, बट यदि हो तो वी हैव अ सफिशिएंट यूनिट टू आप रिस्पॉन्ड. में इतना कॉन्फिडेंस क्यों कि क्राइम रेट बढ़ेगा ही? व्हाई कांट क्राइम नहीं सर, रेट रिड्यूस? मैं बोला सर कि क्राइम रेट की ऐसा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब मैं लॉस एंजलिस में पुराने डिपार्टमेंट में था, तो स्टार्टिंग में मैं जब ट्रेनी था तो मुझे इतना नहीं क्राइम रेट लगता था, क्योंकि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता था ऑन फील्ड. बस जैसे जैसे आई जस्ट गॉट प्रमोटेड ऑन फील्ड पे जब मैं आया ट्रेनिंग के लिए, और तो क्राइम रेट सर मल्टीपल क्राइम रेट्स हो रहे थे सर वहाँ पे. ओके. क्या आपको पता है वैसे पार्क रेंजर डिपार्टमेंट क्या करता है? Sir, basically it's the department for the forest, but forest ranger, but I'm not sure about this, sir. So that's why I join. I would like to join that department and knowing some more, about this department. ओके. आपने पहले ड्यूटी दिया है, सो आई एम अज्यूमिंग आपको एसओपी के बारे में पता तो होगा. Yeah, right, sir. व्हाट इज एसओपी? Sir, SOP is the standard operation procedure. So हम उसके according हम काम करते हैं sir. Okay. Sir, if you don't mind, can anyone have just a sandwich? So sir, Yeah, I'm sure, I'll feeling give you. hungry. Yeah, thank you so much, sir. Yeah, thank you so much, sir. Yeah, thank you so much, sir. Yeah, you can continue. Yeah, so I'll ask you the most basic question. That is reasonable suspicion, probable cause. What do they mean? सर रीजनेबल सस्पेक्शन सर इज़ बेसिकली जैसे मैं किसी पर्सन को किस सिचुएशंस में देखता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि उसने क्राइम किया है कि नहीं. सो सर वो रीजनेबल सस्पेक्शन में आएगा. ठीक है, जस्ट लाइक कहीं पे सूट आउट हो रहा है, ठीक है, और मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे एक बंदा दिख रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि उसने फायर किया है कि नहीं. सो मैं उसे एज अ रीजनल सस्पेक्शन के द्वारा मैं डिटेन करूँगा. ठीक है, और उसका जो भी प्रोसेस होगा, GSR और वट. यदि प्रोबेबल काउज में यदि मैं उसको देख रहा हूँ शूटिंग करते हुए या शूट आउट करते हुए, सो मैं उसे डायरेक्ट कप करूँगा, और जो भी हमारा जो भी उसको प्रोसीड करना होगा वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करूँगा, इंटरोगेट करूँगा मीन्स. आप कौन सी सिचुएशन में सर्च करोगे, कौन सी सिचुएशन में फ्रिस्क करोगे? सर फ्रीज मैं करूँगा जब मैं रीजनेबल सस्पेक्शन होगा तो मैं फ्रीज करूँगा उसे. ठीक है, एंड सर और सर्च मैं करूँगा सर रीजनेबल सस्पेक्शन में भी कर सकता हूँ विथ हिज परमिशन यदि मुझे ऐसा लगता है तो, बट प्रोबेबल काउज में मैं उसे सीधा सर्च करूँगा सर बिना विदाउट एनी परमिशन. Without any, okay. Yep. इसमें I have two parts of the question to this, okay? पहले में फ्रिस्क में what all will you notice? फ्रिस्क में मैं सर अपने हैंड से चेक करूँगा, तो जो भी मुझे फिजिकली यदि कोई इथल उथल ऐसा फील होता है तो मैं वो करूँगा. I'm going to give you a situation, okay? Yep. आप अकेले हो ऑन ड्यूटी. Yes sir. आपको एक हाउस रॉबरी का डिस्पैच अलर्ट आया. Yes sir. आप वो लोकेशन पे पहुँचे.
Yes, sir. एंड आपने देखा कि वही टाइम पे वही घर से एक लड़की बाहर आ रही है एंड Yes, शी sir. हैज़ सम फॉर्म ऑफ थिंग्स इन हर हैंड दैट शी टुक फ्रॉम द हाउस. Okay, sir. आपके पास प्रोबेबल कॉज है एंड यू नो शी इज़ द सस्पेक्ट. आप जाते हो उसके पास तो अरेस्ट था. Eventually, she tells you that you cannot cuff me, you cannot search me. I will only allow a lady officer to cuff and search me. And आप अकेले हो on duty. Okay, sir. आप क्या करोगे? सो सर मैं उनको कफ नहीं करूँगा, उनको मैं इंट्रोगेट के लिए ले आऊँगा सीधा, ठीक है. एंड मैं बैकअप का वेट करूँगा, कोई लेडी ऑफिसर्स यदि शहर में आती है तो, और नहीं आती तो मैं अपने सीनियर ऑफिसर का वेट करूँगा. जैसे वो बोलेंगे यदि मुझे प्रोसीड करना है उनको, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोसीड समझ करूँगा. लो you are the highest in command. There is no one senior than you. तो आप क्या करते? कोई लेडी ऑफिसर आ नहीं रही है. हम you are the highest in command. आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. क्या करोगे आप? सो मैं उनकी परमिशन लूँगा कि मैं One second, एक सेकंड रुको. Send it. एक कैंडिडेट आया है लेकिन उसका मेडिकल Yes, मतलब sir. नहीं मिला है, तो क्या करना है उनको? You can tell them to wait. I'll just come and talk to them after this interview. हाँ बताओ. ओके सर, सो मैं उनसे परमिशन लूँगा कि मैम मुझे आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रोबेबल काउस में आपको हमने वो किया है, अरेस्ट किया है. सो वी हैव टू सर्च यू. एंड यदि वो नहीं भी मानती सर, तो मैं उनको एज़ पर दी जो हमारा लॉ वो है SOP है, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको बोलूँगा कि मुझे आपको कब वो सर्च करना ही होगा. यदि आप सर्च नहीं कराओगे, सो दिस और द एडिशनल चार्जेस विल बी अप्लाई टू यू. ठीक है, ऑलराइट. क्या आपको अमेंडमेंट्स के बारे में पता है? ये अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Yeah, there's a few amendment. Okay, and I'm not know about the more, but I just know about the fews. Can you tell me three? Yeah. So, sir, first of all, you can't judge anyone with his color or religions or gender. Okay, and second one, sir, you can't enter any private areas without any evidence. And sir, the third one, that means the civilian has a right to have a gun, to carry his gun with his license. So the fourth one, you can say. So, sir, fourth one, sir, you can't interrogate anyone, without any valid proof or valid reason. Yeah. Sorry, sir, I just tell you one extra, sir. I'm sorry. That's okay. That's okay. क्या आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? Code of conduct, sir, I'm not exactly know, but That's it's okay. look like an SOPs something. Okay. We have to follow the code of conduct, means SOPs before doing anything. Okay. आपने स्किल्स में लिखा है कि you're a weapon combat expert. Yes, sir. आपने ये स्किल अटेन कैसे किया? सर मैं जब अपने कैडेट रैंक पे था, तो हमारे कॉम्बैट ट्रेनिंग होती थी. सो मैं कॉम्बैट ट्रेनिंग में सर मैं ऑलवेज फर्स्ट आया था. तो मुझे कॉम्बैट ट्रेनिंग में तो मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया था एंड सर्टिफिकेट भी दिया था कि यू आर द कॉम्बैट ट्रेनिंग में फर्स्ट आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता था? सर एक तो फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी, एंड योर एम टारगेट एंड जो भी आपका जो कॉम्बैक्ट होता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट, वेपन टू वेपन कॉम्बैक्ट, एंड these थिंग्स में आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है सर. मीन्स यू हैव ऑलवेज बी अप स्किल्स, मतलब आपके वहाँ पे होने चाहिए. ऑलराइट, ठीक है. सैंडर, शर्लॉक, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर? ठीक है. चेन ऑफ कमांड के बारे में पता है तुम्हें? चेन ऑफ कमांड क्या होता है? यस सर, चेन ऑफ कमांड बेसिकली चेन ऑफ कमांड होता है कि सर एक हायरार्की होती है, जैसे पीडी में एक हायरार्की होती है. सो यू ऑलवेज बी फर्स्ट प्रायोरिटी, और आस्क द क्वेश्चंस टू योर one up rank, just like if you are the officers, you will ask from the senior officers. So you can't directly go to the chief or deputy chiefs. And this was the reason why the chain of command is followed. Because
ये एक हायरार्की होती है सर कि हर स्टेज में हर आप यदि आपका कोई एफटीओज असाइन है तो आप उनसे क्वेश्चंस फर्स्ट करोगे बिफोर गोइंग एनीवन। सो सो उससे क्या होता है सर आपकी बेसिकली मतलब कि सर आप एक एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर फॉलो करते हो किसी भी चीज़ को पूछने के लिए। सो अच्छा, चेन ऑफ कमांड इज अ वन वे थिंग और अ टू वे थिंग? चेन ऑफ कमांड टू वे थिंग होता है सर। ऊपर से नीचे भी वैसे ही होता है और नीचे से मतलब कि नीचे से भी वैसे ही होता है रिंग से सर। सो आर यू टेलिंग मी कि चेन ऑफ कमांड टू वे थिंग है, तो ऊपर से नीचे अगर चीफ ऑफ पुलिस को मुझे कोई ऑर्डर देना होगा तो ही हैज टू फॉलो द कमांड, पहले कैप्टन को, कैप्टन से लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से No, no, सार्जेंट। no. They can also give the direct to me, but the एज अ स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर से देखा जाए तो सर वो अपने अपने से जो जूनियर होंगे उनके रैंक के उनको देंगे और जो उनसे जूनियर होंगे तो वो उनसे देंगे। सो बट इन भाई इमरजेंसी यार दे प्रीतम कैन मत ऑल्सो बोलना, दे मैं कैन हेल्दी खा डायरेक्टली रहा हूँ गिव द आजकल। कमांड्स। According to you, what is force of escalation? So force of escalation basically if you are just like abuse you're just crossing break the force just like for example कि आप कोई भी situations में हो आप वन क्लास वन के फाइट्स में हो ठीक है आप सडनली क्लास यदि सामने वाला क्लास वन का यूज कर रहा है बट यू ब्रेक आपने सडनली अपग्रेड कर लिया क्लास टू वेपन में चले गए तो फोर्स ऑफ एस्केलेशन में आता है सर वो कि आप अपने फोर्स का गलत यूज कर रहे हो उस सिनेरियो में। इसमें मुझे एक तो क्वेश्चन ऐड ऑन करना है। टेल मी फोर्स ऑफ एस्केलेशन व्हेन नो वेपन्स आर इन्वॉल्वड। तो सर फीस से होगा सर अब तक किससे होगा? आप कर सकते हो मतलब कि आप ऑन फुट से कर सकते हो सर कैसे? एक्सप्लेन बेसिकली एग्जांपल। जस्ट लाइक यदि फोर्स ऑफ एस्केलेशन हम कर रहे हैं तो जस्ट लाइक अ यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट बुला लेंगे जैसे मैं जितने जितने बंदे होते हैं उनके डबल बुलाना पड़ता है जैसे M+2 होता है सीनेरियो M×2। सो जैसे कोई क्रिमिनल 2 क्रिमिनल है तो हम 4 जाएंगे ठीक है बट इन दैट सिनेरियो वी टेक अन एक्स्ट्रा जैसे मैं दो क्रिमिनल में 8 ऑफिसर्स को लेके जा रहा हूँ तो फोर्स ऑफ एस्केलेशन हो जाएगा सर वहाँ पे। चलो यू कैन कंटिन्यू है। हाँ, so you allowed to escalate your force like that? आपने कहा था कि force of escalation आप pistol use कर रहे हो and then you switch to your SMG or rifles. So is it यस allowed to सर। do that? नो सर बिकॉज सर हम मैचअप फोर्स को यूज करते हैं एज एन ऑफिसर। तो सो force of escalation कभी भी use नहीं किया जा सकता? Is that what you're telling me? नो सर इन टेररिस्ट सिनेरियो यू कैन यूज इट। Can you give me one example? सर कोई टेररिस्ट है और वो डिक्लेयर हो गया है कोर्ट Can you से give और me हम any example other than a terrorist? सर नॉट रिमेंबर राइट नाउ। ठीक है। या सर नॉट कोड रेड में भी हम नहीं कर सकते। कोड रेड में भी सेम वेपन यूज करना चाहिए हमें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो होती है। Can you tell me कि a match of force during a pursuit? परसूट Pursuit का सर मतलब जानते हैं? मैच सर कैन यू जस्ट elaborate Okay, so a pursuit is basically a vehicle chase, car chase. car You're chase chasing a okay suspect with your vehicle. It's a मैच pursuit. ओके सर जस्ट लाइक ना जैसे कोई भी क्रिमिनल के पास यदि कुछ अपग्रेड व्हीकल्स है जस्ट लाइक फरारी और मर्सरीज है ओके सो हमें भी उस तरह का यदि स्पीड यूनिट है उसके पास ठीक है स्पीड व्हीकल्स है सो हमें भी स्पीड यूनिट उस सिनेरियो में लेना पड़ेगा। हम नॉर्मल व्हीकल से उनको चेज नहीं करेंगे सो हमें भी बैकअप के लिए स्पीड यूनिट बुलाना पड़ेगा या Okay. कोई बाय या हाँ जैसा I'm talking about force of escalation in a pursuit. फोर्स ऑफ एस्केलेशंस में जस्ट लाइक कोई सिंपल व्हीकल से है सर और हम उस सिनेरियो में स्पीड यूनिट बुला रहे हैं या एयर यूनिट बुला रहे हैं तो फोर्स ऑफ एस्केलेशंस हम ब्रेक कर रहे हैं मतलब वहाँ पे यू कर रहे हैं। Okay, reasonable suspicion probable cause पूछ लेगा सर? हाँ हाँ ठीक है। Okay, send it sir. आप कुछ पूछना? हाँ। Yes, Are you sir. aware of the amendments? Yes, I just told you the amendment. All of them, right? Yes, sir. So I'll be stating some situations. You have to guess which of the amendments are violated in this situation. Okay? Okay, sir. खत्म। An officer is
refusing that citizen cannot carry a licensed weapon. सर यदि उसके पास लाइसेंस वेपन है तो सर उसके पास राइट है रखने का. So Which sir, amendment is getting violated of the citizen? this is violated. Hmm. सर वायलेट तो नहीं करेगा सर, उसके पास राइट है वेपन रखने का, बट यदि वो मिसयूज कर रहा है वेपन का तो सर वो राइट्स को ब्रेक कर रहा है, अमेंडमेंट राइट को, उसके पास जो है कोर्ट से. ऑफिसर मना कर रहा है हाँ. सिटीजन को बंदूक रखने से, जबकि वो लाइसेंस है, उसने ट्रेनिंग भी ली है, उसने वेपन भी रजिस्टर करा है. Is the तो officer wrong? Is he right? Is he violating the amendment? Yes sir, If he is he definitely. violating the amendment, which amendment is he violating? सर वो एक सर अमेंडमेंट बेसिक वो वाली सर, यदि बोरोर के मैं की सॉरी मैं की नंबर पर्सन के पास नंबर सर मुझे याद नहीं है बेसिकली. ठीक है. Officer conducts a raid warrant on a businessman without any proper documentation. Like randomly just gathers a team and dashes into his house. Yes sir. So amendment break कर रहा है ऑफिसर सर without any amendment. Sir, really I don't remember the numbers. Just I have ideas. Okay, no problem. Yeah. बाकी तो evaluate कर लिया है आपने. I have one situation for you. See, if you and your colleague, female colleague, you both officers are chasing a suspect, okay? Yes, sir. And the suspect takes you down and you get injured. Okay, you're unconscious or you're just injured and you're down. Okay, and your female colleague is able to take the suspect down. She cuffs him and takes into the custody. So the suspect starts trash talking to your female colleague. Okay, and abuses her a lot, and you are with them and she's taking you to pillbox and you get treated. Hearing all this, how will you handle the situation if she hands over you the suspect? So सर मैं डिसरिस्पेक्ट ऑफिसर डिसरिस्पेक्ट के लिए उस पर एक और चार्जेस ऐड करूँगा. एंड जो भी और रीजन जिस भी रीजन से हम उसे अरेस्ट मतलब कि अरेस्ट किए हैं सर, वो भी चार्जेस हम उस पर लगाएंगे, और जो भी हमें उसे जो भी उस पर लगाना है चार्जेस Okay, but as a reason I wasn't selected this for my improving next time, not वो सारे carrying हम any उस पे decision लगाएंगे. by Your someone. colleague who is a female No, that you officer, cannot inform. You she cannot is the inform same every rank as you are. candidate. She gets Candidate why they very are triggered rejected. regarding the That you cannot situation, do. and she tells you to multiply his charges by into 2 No, because sir. the person, the suspect, gets very personal to her. So what will No, you do sir. in this? So as per the SOP, जो भी डिसरिस्पेक्ट का जितने भी चार्जेस होंगे मैं उतना ही लगाऊंगा. एडिशनल्स में चार्जेस नहीं लगाऊंगा उस पे. You have any more questions? Nope. No, most of them are covered. All right. Thank you so much, Jan. This was all for your interview. आपका response sir. आएगा due time में. We will let you know if there's a positive reply or not. So yeah, thank Okay, you for your time and thank you for the interview. You can take your leave. Thank you so much, officers, and it's a very nice interview, and thank you so much, officers. Yeah. Can I leave or? Yeah, you can leave. Yeah. Okay, thank you, officer. हाँ जो एक इंसान है जिसके पास नीचे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है. आ जाओ. देखते हैं क्या सीन. मेडिकल सर्टिफिकेट लाना क्या है जी? Right now? 24 hours लगेंगे उसको लेने. हाँ क्या? ओ हाँ. हाँ. फिर तो क्या? ओ हाँ 24 लगेंगे. That's right. अरे वो जिम किया था ना कल. इफेक्ट आ रहा है. ऐसा भी सीन है क्या? तो चल कभी नॉर्मल पेट्रोलिंग करते हैं, वो जब आएगा ना आगे करेंगे.
हाँ भाई फाइनली खुली हवा भाई। इसी तरह अंदर एसी था लेकिन वो होता ना सफोकेशन। गाड़ियों का शोर, नहीं सफोकेशन, गाड़ियों का शोर, आसमान आसमान सच्चे होता है। आज रात में कुछ है क्या इंटरव्यू या खत्म पूरा? आज रात में हमारा एक पीडी रिलेटेड मीटिंग है, तो आज का इंटरव्यू खत्म है। अच्छा कुछ नहीं तो सेंड इट, चले कोड 1। चलो ओके सर, मुझे बस एक ट्रैकर लेना है। दास बाबू जरा बात करा के पीडी में कैंटीन खुलवा दो। कैंटीन वो थोड़ा मुश्किल है लग रहा है क्योंकि जगह नहीं है ना। क्या जगह नहीं है? इतने सारे तो वो देखे मैंने। अरे पर काम करने के लिए जगह है वो। अरे नहीं नहीं, वो देखा नहीं आपने खाने की जगह? हाँ मतलब वो ये खाना रखेगा देख, ये तो खराब तो हो जाएगा ना थोड़ी। हाँ ऐसा कुछ ऐसे बनाया लो जहाँ पे भाई। जब जिंदगी में बर्गर शॉट आएगा, वो आएगा, ये बोलेगा नहीं कैंटीन से ले लो। छी भाई, वही चीज है। चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तब तक। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, बना नहीं रहा चीज। नहीं 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 भाई नहीं आने दो, ठीक है। पर इस मार्केटिंग मैं क्या में कह रहा हूँ आपको, बर्गर शॉट आया नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर कोई होना चाहिए, फिर वो यहाँ से शिफ्ट होके बर्गर शॉट चला जाए तो क्या दिक्कत है ना? तो फिर अभी जेक मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को क्या क्या लेना है चीज यहाँ से एक बार आप पूछ के एक बार मेरे को बोल देना। मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि उस दिन हैंडकप लगा, मेरे को ना हैंडकप लगा दे 2 दिन बाद। पीटी के अंदर हैंडकप लगा, पता है शर्लॉक? ओ भाई किसने लगाया? वो काइट ऐसा कुछ नाम। कीथ आपको हैंडकप लगाने लगे तो आप चीफ सिक्योरिटी थे ना? आप तो चीफ। तो वही चीज है, मेरे पास कुछ नहीं है बचाने के लिए। नहीं पूछ रहा, टेजर वेजर तो होगा ना? नहीं ये कुछ नहीं है मेरे पे, कुछ दिया मैं नहीं बात है। करता हूँ, आज हमारी मीटिंग है, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ अभी मैं सोचा अभी चले जाओ, पर करूँगा तो क्या करूँगा? इतना जल्दी? अभी तो रख फोन कर ड्यूटी दे दो। थक गया हो यार अभी। वो भी है, ये पता है कब से ले रहा है ये, बहुत दिन से। ऑफ फील्ड में अभी एक हफ्ते तक ऑफ फील्ड बहुत होने वाला है। हैं? वाह क्या? अच्छा ये जोन्स कौन है? EMS मैं वही सोचा था। ठीक है, स्पैम ना करो। मजा आया क्या लग रहा है? EMS का रेडियो नंबर शर्लॉक MDT पे ये कर लेना या कॉल साइन। हाँ मैं करो। करते जा रहे हैं। 1-1 direct to EMS। चलो भाई मैं जाके बचा के आता हूँ। चलो आजा आजा चलो। मुझे ये देखिए कितना मन माँ कसम। वो सुन, तू उसको बचा लेगा क्या? कौन? ये स्पैमर अच्छा, को। ये बस नहीं है। हाँ हाँ अच्छा मैं एक हार्ड नैप लेके आया, मेरा थोड़ा सा ठीक है। जा हम लोग वेट कर रहे हैं, आजा। ये देखो
गेम है रे क्या कर रहे हैं? चलो मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ अभी। तुम जा रहे हो क्या? हाँ थोड़ा ब्रेक ले लूंगा यार मैं इतना तुम बस लो थोड़ा- अभी ब्रेक, तुमको जरूरत हाँ, है। थोड़ा 1-2 घंटे के लिए चिल कर लूंगा फिर मेरा मीटिंग ही है। हाँ करो करो जाओ, चलो बाय बाय। बाय 101 show me 1042 for the day। थैंक यू फॉर योर सर्विस। चलो गाइस अभी के लिए इतना ही, मैं रात को आऊँगा प्रॉब्लली सम VLT। जॉर्डन बचा के 19 आ जाना, मेरे को 91 देने। ठीक है आई विल टर्न स्ट्रीम ऑफ नाउ एंड आई विल फिगर द रेस्ट आउट। जो भी आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मतलब टायर्स अभी बैक बाय गाइस।